Oh, A very good morning and welcome. I am Dr. Shikha Goel, and I'm delighted to be back again as the anchor of this seminar. good morning, Dr. Shikha. Can you hear me? Yes, sir, you're audible. Is it clear? Yeah, it is. So, like many of our audience of this seminar, I am also keen to learn further about the flower remedies. And I extend my thanks to all the listeners out there who has joined us today in the third and final session of this three-part certified course to discover the enchanting word of Dr. Bakshi's flower remedies. I warmly welcome our CMD sir, Dr. SPS Bakshi sir, Director of Baxen Group, Dr. Tanya Bakshi, and a very special welcome to our guest speaker, Dr. Sameer Chokar sir, whose expertise and continuous efforts in flower remedies are being the guiding light for many of us. I extend a hearty welcome to the vast variety of audience for today's session. We are delighted to have you all throughout this three-part certified course. Your consistency shows that the session has been beneficial for all of you. It's my pleasure to again introduce you, sir, to introduce Professor Dr. Sameer Chok, sir. Sir graduated in homeopathy in 1992 from Mumbai University, followed by post-graduation through British Institute of Homeopathy, United Kingdom, an MD from the very prestigious, world-renowned Mumbai University. Am I audible? Yes, you're audible. There are some people who are saying that they're not audible, so probably there must be some internet issue. So I think it's okay. Please go on. Okay, sir. Sir has also pursued post-graduation in addiction treatment from Canada and did fellowship in advanced homeopathy from the Other Song International Academy. He is presently attached as the Dean at Dr. Batra's Homeopathic Academy and a guest teacher for advanced postgraduate homeopathy in Brazil and Turkey. Dr. Sameer has been teaching and practicing homeopathy in India and abroad for last 26 years and has specialized in the treatment of asthma, arthritis, autoimmune disorders, ADHD, autism, learning and behavioral disorders, and whatnot. He has shown the magic of flower remedies not only in his lectures but also in the cases. Thank you, sir. And to make us understand better, the categories are divided of the flower remedies. In the previous two sessions, we have learned how flower remedies are made,
what are the situations where flower remedies can help. And we also covered the categories, including fear, uncertainty, loneliness, overcare, oversensitiveness, insufficient interest. And today we are going to cover despondency. Sir, I want to bring to your notice that due to some technical issues in the last session, that is the second session, many of our learners missed some points about the overcare, oversensitiveness, and insufficient interest. So I request you for their welfare, kindly revise or recap the previous session before Sure, commencing the sure. third one. I will. Sure. Over to you, sir. Kindly Yeah. start the session. Thank you very much. Will you allow me to share my screen, Shita? Is it possible? Yes, sir. Okay, so good morning, everybody. And this is our third session, as you all know. And thank you for bearing with me all these three sessions, the third session too. Last time, due to some technical glitches, we were not able to, I think there was some problem and we were not able to record the session. But no worries, I am always with you as far as any problems are concerned, any queries are concerned. And we will just quickly recap what we did last time. So last time we did some categories where we talked about over care for welfare of others. So we talked about remedies like chicory. Now remember chicory, as I told you last time, they do a lot for others, but at the same time they expect also, which is a normal thing. Remember, everybody when somebody does, our parents when they do for us, they expect as children we should do something for them. But when the care and when the expectation becomes too much, when it becomes morbid, when it becomes too much of a load to the opposite person, that is when chicory is concerned. Remember, so these people are full of love and care, but they expect a lot of return, and when they are not, when they don't get what they want, they get slighted, they get unnecessarily hurt if they don't get all what they expect, and then they start becoming more sarcastic and all those things. So there could be a mixture of other remedies also coming when a person comes to us. Remember, as we have been talking that and people doctors are asking questions that what are the backflows for arthritis or what are the backflows for migraine. So we don't have any remedies for any specific disease. It is all about the emotions. It is all about the feelings that you that are evoked due to the illness. How you perceive the illness as, what you think of your illness as, what is your main concern, how do you relate your illness to, and what emotional changes come into you after the illness. Now, okay, remember we had talked about type remedies and we had talked about mood remedies. So there are two types of flower remedies. Another concept that I want to introduce today is that when there is a type remedy, as in homeopathy, most of us are homeopaths, so we know what are constitutional remedies. That is how we are built up, right? The physical and the mental build up. As far as flower remedies are concerned, the type remedies are those which are constitutional remedies. That means somebody who is kind of a timid mild person right from the beginning. It's not a passing phase. He has been a mild timid person since long. He's got a lot of fears. He's shy. He's not able to come out in the crowd. He's not able to talk in front of the crowd. So mumulus becomes a type remedy for that person. Are you getting it? While mood remedy could be anything. Now chicory itself could be a mood remedy. That means overall during the life the lady could be absolutely okay, no problems. But when the new daughter-in-law comes, or when she's doing something for her son specially and the son is not giving her back in form of expectations, in form of care, in form of finance, whatever it may be, then she feels slighted and hurt. So chicory could be a mood remedy. Are you all getting it? Similarly, there could be many mood remedies and many type remedies. So you have to understand a type remedy is something which is a constitutional basis, while a mood remedy is something which is a
passing phase. So people who overcare for welfare of others, number one remedy was chicory, which we did last time. But what is the main problem? They do care, they do love, they do a lot of the things for their families. But what is the problem? They start expecting, and over expecting is the problem. That's where chicory becomes a problem. And then they are quite possessive and clingy. Remember, we compared it with Kalika. Kalika also too much responsibility for others, too much care for others. We have a homeopathic remedy called Kalika. We have a homeopathic remedy called Delcamara. And one of the rubrics last time we discussed was impatience children about. Now, children, that doesn't mean only small children. Children could be a grandfather or grandmother. Anybody who's a dependent is a children, remember. So somebody who looks after too much and asking them, where are you going? What are you doing? Did you take your medicine? This is kind of a overcare. Now, this is different from the overcare of red chestnut. Remember, we had also talked about red chestnut, where there is overcare for others. But red chestnut is not in this variety. Red chestnut, the care leads to a lot of fear. What will happen to my relatives? What will happen to my child? So that fear aspect comes upon, and therefore red chestnut is involved or is included in the fear category, not in the overcare. Though they are also overcaring. So you might, kind of mistake a chicory and red chestnut many times. But red chestnut basically has fear that something will happen to them out of care. Now remember, so care is in both, but care leading to over expectation and feeling hurt and being possessive and clinging leads to chicory, while over care leads to a lot of fear. What will happen? Where is he? Did he eat his food or no? What will happen to him? My son is in United States. He's studying there alone. What will happen to him? I keep on calling him again and again. This is not possessiveness, but this is fear out of care. Remember. So there are always subtle differences in these flower remedies which you have to do. Remember, we have to understand because giving a wrong flower remedy for a emotion which is not there, it will be acting like a placebo. Remember, there won't be any side effects, but the action won't be there. So we have to clearly delineate where the things are. Okay, the next remedy after chicory for overcare last time we did vervain. Now, vervain, as I've told you, they have a keen sense of justice. They care so much for others that they see to it that they put across their point very strongly. They are very very enthusiastic. They are full of energy. नहीं आपको ये करना ही पड़ेगा because ये आपके लिए अच्छा है. हम सब के लिए अच्छा है. So keen sense of justice, extreme mental energy, and throwing themselves into a cause. Are you getting it? So care is there, but care as far as what? That what I'm saying is good for you. This is very very important. Now remember, what did our Chikori say? I am doing something for you, but you are not doing anything back in return, and therefore I am feeling hurt, and I'm quite possessive and clinging to you. So there is a care. Here also, Varven, there is a care, but Varven wants to put across his point कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आपके लिए अच्छा है और आपको करना ही पड़ेगा. Keen sense of justice, going for a cause. They'll pursue it, keep on pursuing. नहीं तुमको ये करना ही पड़ेगा. Like a mother telling the child, even if he doesn't want to go to engineering, नहीं नहीं तुम्हारे लिए मेडिकल ही अच्छा है. मैं बोलती हूँ तुम्हारे लिए मेडिकल अच्छा है, मेडिकल में ये है वो है ये है. अपना पॉइंट परस्यू करना एंथुजियास्टिकली. जब तक सामने वाला मानेगा नहीं तब तक दे आर अनएबल टू लिसन टू ऑल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू. नहीं मुझे सुनना ही नहीं, जो मैं बोल रही हूँ आपके लिए वही ठीक है, वही आपको करना चाहिए. दैट इज वर्विंग. सो dogmatic, traditional, again coming close to Kalika, remember. So overcare for welfare of others category is very, very close to Kali group of remedies, remember. So understand whenever you're giving a Kali group of remedy, think of all these remedies. कहाँ पे आप ये ऐड कर सको और अपने क्योर को एक्सेंचुएट या फास्ट कर सको. ठीक है. नेक्स्ट रेमेडी वी टॉक ऑफ इज वाइन. नाउ वाइन इज अनदर रेमेडी जहां पे केयर तो होती है, बट केयर का एस्पेक्ट कैसा होता है? डोमिनेशन होता है. आर यू गेटिंग? इट इज नॉट परसुएडेड. परसुएड करना एक अलग बात है और तुमको करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं. दैट इज अ डिफरेंट. सो वाइन एंड वर्वेन में अगेन देयर इज अ सटल डिफरेंस व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड. वाइन में अपीयर एज वेरी वेरी डोमिनेटिंग, रिमेंबर. वर्वेन में एक ऐसा केयर होती है जब परसुएड कर रहा है सामने को. वर्वेन बोलेगा अरे ये करो, आप आपके लिए अच्छा है, मैं बोल रहा हूँ आपके लिए अच्छा है तो करो. प्लीज भी बोल सकता है, बट वाइन प्लीज नहीं बोलेगा. दे नो दैट व्हाट इज बेस्ट फॉर अदर्स एंड दे आर वेरी डोमिनेटिंग. सो हमारे रेमेडीज में जो लाइकोपोडियम है, वेराट्रम है, प्लेटिनाज है, जो बहुत डोमिनेटिंग है, डिक्टेटोरियल है, that comes close to wine, remember. So when you understand lycopodium, think of wine also. So many a times I've given lycopodium and wine together in order to, quicken and hasten the cure, remember. So they're strong, enjoy exercise of power. They can be tyrannical fathers. They can be tyrannical teachers, professors, overbearing bosses.
मैं जो बोलता हूँ माई वे और हाईवे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. That is the line for wine. Whenever a wine person comes right in front of you, will say my way or highway. You have to follow whatever I'm saying. Quite dominating dictatorial people, right? But again, the background is over care for welfare over. तुम्हारे अच्छे के लिए मैं बोल रहा हूँ, यही करना पड़ेगा तुम्हें. Now there is a persuasion plus lot of domination. So when you have vervain plus lot of domination and tyranny, think of wine. So wine could be vervain plus domination, remember. So just to understand, okay. Next remedy is beach. Again, over care for welfare of others. Beach is intolerance. क्यों ये कर रहे हो, मत करो, मुझे नहीं अच्छा लगता ये, और ये आपके लिए भी अच्छा नहीं. So they feel that everything around, just like our Nakswamika, they are very very particular, very very fastidious, they are intolerant. So every flower remedy, remember, the most important thing is either you remember it according to the group, the 7 groups, or understand according to a keyword. जैसे बीच का कीवर्ड है इंटॉलरेंस. मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता. Whenever the person says ये पेन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शी सेज मुझे स्मेल बर्दाश्त नहीं होता, मुझे वॉमिटिंग होती है, मैं कुछ भी स्मेल आता है तो मैं वॉमिट कर देती हूँ क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती. मेरे कान में बहुत दर्द है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता. मेरे सर में दर्द है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता. मैं इस आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता. इनटॉलरेंस. So beach could be for intolerance of anything, intolerance of pain also. So can come close to chamomilla. Remember, chamomilla, sina, the intolerant, hipar self, जहाँ पे hypersensitivity है, intolerance है, you could think of beach. And they are, intolerant. They absolutely lack compassion. नहीं, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, critical है, fault finding है, they cannot understand others. कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है. Now this is very very different from wine and vervain. Remember. तुम गलत कर रहे हो, तुम ये भी कर सकते हो, तुम्हें यही करना चाहिए. So how people speak and what are the emotions behind that is very very important. Don't look at what the person is speaking. Remember, it's very very important. The first thing that we have to remember in homeopathy as well as in Bach flower remedies is don't just look at what he is speaking, but how he is speaking, number one, and why he is speaking. So go behind. केयर तो दिख रही है, पर केयर के एक्सप्रेशंस क्या है, केयर के इमोशंस क्या है, केयर के फीलिंग्स क्या है बिहाइंड, वो जानना बहुत जरूरी. बीनीथ, दे से बीनीथ द रेमेडी यू फाइंड आउट, आई वुड से बिहाइंड द रेमेडी. गो बैक बिहाइंड द रेमेडी एंड फाइंड आउट व्हाट इज द फीलिंग. सो बीच में ओवर केयर फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स है, बट व्हाट इज दिस ओवर केयर अबाउट, दैट दे आर क्वाइट इनटॉलरेंट. दे एक्सप्रेसेस एट लॉट ऑफ इरिटेशन, इनटॉलरेंस एंड इज लॉट ऑफ इरिटेबिलिटी. छोटे बच्चों में भी बहुत इरिटेबिलिटी होती है, बहुत सारे intolerance is also an allergy, remember. Therefore beach is a very very important remedy in autism, where the autism or allergies or ADHDs, where there is a lot of intolerance, there is a lot of irritability, lot of temper tantrums, lot of screaming. जो autism में होता है, they'll say they'll keep on doing some sounds like this. So beach is a very very important remedy for that, remember. So you can use beach in small children, children during dentition when there's a lot of crying. When thinking of chamomilla, you give chamomilla, it doesn't act. You give senna, it doesn't act. Think of beach, and it will surely act. No. Okay. So irritability is coming from overcare of welfare of others. Next is rock water. We compared it with Mahatma Gandhi ji, right? We talked about how these great people only think about others. They don't think about themselves, like our causticum, remember, like our aurum metallicum. Self repression, self denial. इतना केयर करते हैं दूसरों के लिए, खुद के बारे में नहीं सोचते. खुद खाना खा रहे हैं कि नहीं, खुद अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, बस दूसरों के लिए अपने आप को सिर्फ फ्लो करना. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दे हैव strict towards themselves, very very rules and targets, strict. And now this fixity is also very important. Remember, rock water में एक fixity होती है कि यही सही है, यही करना है, ऐसे ही करना है, मैं ऐसे ही करूंगा. He is not forcing others. Remember, he is not Vervain who is trying to force others his views. He is not wine who is dominating on others for his views. He is not feeling कि अरे मैंने इतना किया, मेरे लिए कोई कर नहीं रहा है, like chicory. Are you getting it? So see how overcare for welfare of others differentiates. So rock water is just doing for others without expecting, and he'll be a hard person on himself. Remember, he's not hard on others, he's hard on self. They have rules, targets, they are strict and harsh with themselves. If they seek influence of others, it is by example only. They don't criticize like beach people, nor they persuade like vervain and command like wine. Okay, so this is very, very important. But
रॉक वाटर देने के बाद ऐसा नहीं कि आदमी एकदम आई मीन ही विल बिकम इंडिफरेंट टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स, बट ही विल डू इट इन मॉडरेशन। रिमेंबर, अपने घर बार अपने बीवी बच्चों को छोड़ के ये सब कुछ करेगा नहीं। आर यू गेटिंग इट? इट मेक्स मी रिमेंबर ऑफ अ मूवी इन विच अमिताभ वाज देयर इन I don't know what was that movie where he was doing everything for his master, you know. Not it's not about Centaur, you know. Centaur is totally different, who's very, very mild and who will do everything whatever the master says. But this guy left his family and everything just for a cause, remember. And there are many such national leaders, many such, you know, freedom fighters who have done this. They have left their families, they have left their wives, they have left their children, they have left their occupations. Now, recently, the movie going on is about Savarkar, right? He's yet another example of Rockwater, left everything for independence. So these are the people for welfare of others at a large scale, remember, and they form an example for others. बहुत कॉमन नहीं दिखेंगे, जैसे ऑरम मेड भी हमें बहुत कॉमनली दिखता नहीं, वैसे रॉक वाटर भी बहुत कॉमनली दिखेगा नहीं। बट रॉक वाटर में एक तरह से रिजिडिटी है, जो अगेन आई हैव यूज्ड इन चिल्ड्रन हु आर वेरी वेरी रिजिड इन देयर बिहेवियर्स। रिमेंबर, देयर इज अ रिचुअलिस्टिक बिहेवियर इन ऑटिज्म। बहुत सारे बच्चे, नहीं मैं यही प्लेट में खाऊंगा, मैं यही कपड़े डालूंगा, मुझे यही सीट पे बैठना है, मुझे इधर नहीं जाना है, मुझे उधर ही जाना है, गार्डन में यहाँ पे ही खेलना है मुझे। तो दिस फिक्सिटी एंड रिजिडिटी ऑफ थॉट्स can be connected in children and can rock water be good. I have given rock water to many children with lot of rigidity. मुझे यही ड्रेस पहनना है, मुझे इसी कलर का ड्रेस पहनना है, मुझे यही गाना सुनना है, मुझे यही पिक्चर देखना है, मुझे यही स्पून से खाना है, मुझे अंडा ऐसे ही खाना है, मुझे चिकन ऐसे खाना है, मुझे वेजिटेबल यही खाए, ग्रीन कलर की चीजें मुझे पसंद नहीं है। वेरी वेरी रिजिड। तो उसके लिए रॉक वाटर इन चिल्ड्रन यू कैन गिव। So you should know how to connect the main symptoms or main feeling of the batch flower remedies even to physical complaints also. How the physical complaints appear. Remember? Now, next category we did was oversensitive to influences. We talked about agreement. ये लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि अपने के भी एक्सप्रेशंस बता देंगे, अंदर कुछ चल रहा है, बाहर कुछ दिखा रहे हैं, बाहर हंस रहे हैं, अंदर दुखी है। वी हैड कंपेयर्ड दिस रेमेडी विद मैग्नीशियम का, रिमेंबर। So there is a lot of troubles hidden inside, but outside there's a mask of pleasure and happiness, which we saw in the movie Anand, where Rajesh Khanna is suffering from cancer. Remember, he's suffering from a deadly disease. He knows that he's going to die within few days or months, but still outside he's smiling. So these are the people who are not able to express their emotions. They are not able to, you know, they hide their emotions in a way, concealing internal grief behind a facade of carefree and cheerful. The sad clown, like you see in Mera Naam Joker, you saw Raj Kapoor, how he, inside is lot of sadness, lot of, you know, worries, but outside they are making people smile. Similar to what you usually see in the flight, right? The air hostess will always greet you, happy welcome, sir. This is your seat. Would you like to have something? Would you like to have? Who knows what is going on in their life? They may be having severe pain. They may have, somebody might be having severe you know, kind of menorrhagia or some problem with the menses, some dysmenorrhea, some problems at home. Somebody has died, but when they come on their occupation, when they come on their duty, they have to smile. And this smile is a facade where there is some problem inside. It could be. I'm not saying always like that, but I'm just giving an example. Are you getting it? So friends are also often the last one to know. Remember, somebody who's a friend of this person will also know what is going on in his life. So this is agreement. So they're very, very sensitive to what is going on around. That is oversensitivity to influences and ideas. Next remedy, Centauri, as I have told you, they are just like our pulsatilla, Shuimuishi, difficult to say no. Cilicia, difficult to say no to others, very, very kind, gentle souls, but they become like, you know, doormats. Centauri person ends up as a slave of another's wish. It's a doormat mentality. So we have a lot of patients coming to us like that. मैं किसी को ना बोल ही नहीं सकता, मैं अंदर से मुझे लगता है नहीं मैं नहीं करूंगा, फिर भी मैं ना नहीं बोल सकता, तो मैं क्या करूं? So उनके लिए Centauri बहुत एक अच्छी रेमेडी. Remember that. It develops a lot of courage and self-determination. Now that they will not say no to somebody in a way that will hurt others, but they will be assertive. And they'll be able to say, नहीं भाई, मैं मुझे मेरा काम है, मैं पहले मेरा काम निपटाऊंगा और फिर मैं आपका काम करूँ. That is the positive centaur. Negative centaur would say, मैं मेरा काम का छोड़ के मैं आपका काम करूंगा. That is the negative centaur. So you to understand what is the negative part of the batch flower remedy and what is the positive part of it. So what we are going to do is make the negative into the positive. We are not going to completely change the centauri person. We are not going to make centauri a selfish who will say नहीं मैं सिर्फ मेरा ही काम करूंगा, मैं और किसी के लिए कुछ भी नहीं करूंगा. सेंटोरी तो सेंटोरी रहेगा.
और उसको निगेटिव टू पॉजिटिव बनाने में सेंटोरी हमारा हेल्प करेगा. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट रेमेडी इज वॉलनट. वॉलनट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस. मैंने आपको कहा था कि ट्रांजिशन, ये वर्ड वॉलनट का है. किसी भी चीज से आप ट्रांजिट कर रहे हो. ट्रांजिट का मतलब क्या? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना. और न्यूली मैरिड गर्ल एक नए घर में जाती है, तो इतने साल अपने फादर के साथ मदर के साथ रहे, फैमिली के साथ रहे, अभी एक नए घर में जाना, मैं एडजस्ट नहीं हो पा रही हूँ, मुझे अकेले अकेले लग रहा है, मुझे रोना आ रहा है. प्रॉब्लम कहाँ है? एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम, ट्रांजिशन का प्रॉब्लम. एक लड़की आफ्टर मैरिज शी बिकम्स प्रेग्नेंट. ओह, दिस इज अ चेंज, फिजियोलॉजिकल चेंज है, बट शी इज नॉट एबल टू टेक इट. So walnut is for all kinds of changes. Remember, protection against outside influences, against change in particular. स्कूल चेंज करना, रेसिडेंस चेंज करना, जॉब चेंज करना, एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ, एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ये अगर बोले, द फर्स्ट रेमेडी इज वॉलनट. रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, एडजस्ट नहीं कर रही हूँ और मुझे गुस्सा आ रहा है. नाउ रिमेंबर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूं, इसके लिए मुझे गुस्सा आ रहा है, तो आप गुस्से के लिए नहीं रेमेडी दोगे, आप वॉलनट ही दोगे. रिमेंबर दैट, बिकॉज एक्सप्रेशन इज गुस्सा, पर प्रॉब्लम उसका वॉलनट है. कहां से प्रॉब्लम आ रहा है, कहां से गुस्सा स्टेम हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट है. जस्ट रिमेंबर दैट, बिकॉज गुस्से को देख के हम होली दे देंगे, इम्पेटियंस दे देंगे, वर्वेन दे देंगे, बहुत सारी रेमेडीज दे सकते हैं गुस्से में. बट गुस्सा एक्सप्रेशन है, तो जस्ट एक्सप्रेशन के लिए रेमेडी देनी नहीं है. वॉलनट्स आर नॉट, द बैच फ्लावर रेमेडीज आर नॉट गिवन ऑन एक्सप्रेशंस. बैच फ्लावर रेमेडीज आर गिवन ऑन द बेसिक इमोशंस एंड फीलिंग्स. ये आप रिमेंबर कीजिए, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज वी विल गिव रॉन्ग फ्लावर रेमेडीज फॉर रॉन्ग प्रॉब्लम्स. रिमेंबर दैट, बिकॉज द पेशेंट इज गोइंग टू कम एंड टेल यू दैट आई एम फीलिंग एंग्री, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, और तुरंत आपने बिना गुस्से के बारे में पूछ के उसको होली या कोई भी अदर रेमेडी दे दी गुस्से के लिए, इट विल नॉट एक्ट. गुस्सा कहाँ से आ रहा है, गुस्सा क्यों आ रहा है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस एंगर, वेर इज दिस एंगर कमिंग फ्रॉम, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो चेंज मैंने जब से किया है जॉब, तब से मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, गुस्सा कर रहा हूँ. डोंट थिंक ऑफ इम्पेटियंस, डोंट थिंक ऑफ होली, don't think of any other anger remedy, don't think of beach, think of walnut remedy. So now you understand. So change of school, change of job, change of anything, a new, coming into a new circumstance, new situation, not able to adjust. But unlike Sereto, these people don't actively seek out opinions. They have doubt about their path when they hear about opinions. So there is a kind of a ये करूं या ये करूं, बट वो सेरेटो और स्क्लेरेंथस नहीं. यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ट्रांजिशन से प्रॉब्लम हो रहा है. ठीक है. सो अंडरस्टैंड द वर्ड ट्रांजिशन, की वर्ड ट्रांजिशन. नेक्स्ट रेमेडी इज होली. आई टोल्ड यू, होली इज ऑल अबाउट हेट्रेड, जेलसी, एनवी, डिस्ट्रेस. लास्ट टाइम वी टॉक्ड अबाउट दैट ओल्ड एडवर्टाइजमेंट. जब दूरदर्शन था तभी एक एडवर्टाइजमेंट थी, नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड. सो देयर वाज अ टीवी कॉल्ड ओनिडा. तो ग्रीन कलर का एक एक ड्रैगन दिखाते थे, एंड दिस ग्रीन कलर का ड्रैगन वाज सेइंग ओनिडा टीवी ओनर्स एनवी, नेबर्स प्राइड, something like that. Okay, so lot of hatred, jealousy, envy, distress, whenever all these emotions come into us because of something or the other, because somebody stood first in the class, I stood second in the class, competition, somebody wearing a better dress and I'm feeling really jealous. Why is my husband talking to that lady? Jealousy again. So hatred, jealousy, envy, suspicion, revenge, all these kinds of things will come into holy. This is important. This is what I was telling you. In the bad system, anger is a secondary emotion. And we need to look more closely at the cause. Anger based on impatience needs impatience. Anger based on feelings of personal unfairness or impersonal justice could be vervain, remember. Loss of control could be cherry plum. Are you all getting it? So anger is a basic emotion, but it is a secondary thing. Look at the primary. Okay. So what will Holi do? Positive Holi will be full of love. देयर विल नॉट बी एनी हेट्रेड और जेलसी. देयर बी अ एक्सेप्टेंस कि ठीक है, वो अगर फर्स्ट आया तो उसने एफर्ट ज्यादा डाले, इसके लिए वो फर्स्ट आया, ये अंडरस्टैंड करना. सो होली के बाद ये डिफरेंस आना चाहिए. द पेशेंट शुड कम बैक एंड टेल यू दैट इट्स ओके नाउ, आई टेक इट इन माय स्ट्राइड बिकॉज I did not study enough. That's why I did not come first. That's why she came first, because she was studying hard. I understand that, which I was not understanding before. This is the difference that your flower remedy should bring in. Remember. Clematis is our absent-minded person who's always drifting in the future, like Sheikh Chili, like Mungeri Lal ke Sapne. You know, this guy, there was a serial a long, long time when even we were young. Probably you all people are not born also at that time. There was this guy who was sitting and
ही वुड से अरे मैं इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मैं कमिश्नर बनूंगा, फिर मैं ऐसे करूंगा, फिर वैसे करूंगा, एंड देन ही वुड टोटली गो इनटू दैट वर्ल्ड. रिमेंबर दैट. From this world into that world, completely drifting into future, fantasy of future. This is completely different from honeysuckle. Honeysuckle is going into the past. Clematis is going into the future. So a lot of absent-mindedness, children who are absent-minded, children who are looking outside the window when the class is going on, children who are cannot attend properly, children who cannot focus properly, that is all clematis. So clematis, again, very, very good for absent-minded children, absent-minded people, people who drift away in the future, always planning, 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 like our sulfur and, even China. These two remedies were air castles we are talking about. हवे में ये सोचना, ये करूंगा वो करूंगा, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं पर एक्शन कुछ नहीं ले रहे. उसके लिए क्लेमेटिस बहुत जरूरी है. इसलिए बच्चों में क्लेमेटिस ऑल्सो वेरी गुड रेमेडी, स्पेशली ऑटिज्म, एडीएचडी, जहाँ पे अटेंशन डेफिसिट है, जहाँ पे एक ध्यान नहीं लगा सकते, फोकस नहीं कर सकते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, अपनी दुनिया में रहते हैं. मम्मी हमको बोलेगी कि ये बच्चा अपनी दुनिया में रहता है, उसको मैं 4 बार बुलाती हूँ तो भी देखता नहीं मेरे पास, क्या कहाँ पे होता है वो मुझे मालूम है. दैट इज क्लेमेटिस. So use of clematis in children is also very, very important. Remember, not only in adults. See, यहाँ पे difference है. Sometimes people confuse clematis with honeysuckle, but in honeysuckle we live in nostalgic fantasies of the past. पीछे वाली बातों पे सोचते हैं, अरे हमारे जमाने में ये था, आजकल के जमाने में क्या है, पर रिसेंटमेंट नहीं है. रिसेंटमेंट होगा तो उसके साथ होली आ जाएगी. रिमेंबर, पर हमारे जमाने में हम ये करते थे, उस जमाने में इतनी अच्छी चीजें हुआ करती थी, उस जमाने में सस्ता इतनी थी, अभी इतनी महंगाई हो गई. दिस इज ऑल अबाउट हनी. मैं आगे ये करूंगा, मैं वो करूंगा, विदाउट पुटिंग एडिक्वेट एफर्ट्स, इज क्लेमेटिस. रिमेंबर, सो दैट इज हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन हनीसकल एंड क्लेमेटिस. रिमेंबर, ओके. Honeysuckle, this was the example I was giving you. People who are living in the past instead of present prefer to dwell on past happiness or even sad events. Remember, so our natramutes, our ignatias, think about honeysuckle with these remedies. Very, very important. So homesickness and nostalgia are honeysuckle states. Now remember, I was talking about a state remedy, type remedy, mood remedy. So honeysuckle could be a mood remedy. Remember, type remedy नहीं हो सकती. टाइप रेमेडी कॉन्स्टिट्यूशनली हनीसकल नहीं हो सकता. बट कभी कभी हाँ, मैं ख्यालों में चले जाता हूँ कि मैं उस जमाने में था, 20 साल पहले इतना अच्छा था, पेट्रोल इतना सस्ता था, अभी पेट्रोल देखो कितना महंगा हो गया. सो दिस इज नॉस्टैल्जिया, गोइंग बैक इनटू द पास्ट एंड थिंकिंग नाउ. सो क्लेमेटिस इज गोइंग इनटू फ्यूचर, honeysuckle is going into the past. Remember, the remedy helps us to learn from and recall the past without needing to relive it. ऐसा नहीं कि वहीं पे मैं अटक गया हूँ, वहीं पे पास्ट में मैं अटक गया हूँ और आज का प्रेजेंट के बारे में या फ्यूचर के बारे में मैं सोच नहीं रहा हूँ. तो honeysuckle will do this. So a negative honeysuckle will be stuck in the past. A positive honeysuckle will be learning from the past so that the same mistakes or whatever I have done in the past will not be relived, will not be repeated, and I will go ahead in my life. That is honeysuckle. Positive honeysuckle. Are you getting? नेक्स्ट रेमेडी इज वाइल्ड रोज. अरे बस अभी तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, या अभी तो मेरी पूरी लाइफ खत्म हो गई है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता. हु हैव एक्सेप्टेड दैट ऑल द लाइफ दैट थ्रोज एट देम, दे हैव गिवन अप द स्ट्रगल. कोई स्ट्रगल है ही नहीं उनकी लाइफ में, एनर्जी नहीं है. थोड़ा बहुत ऑलिव जैसा है, कहीं पे अपनी एनर्जी चली गई है, बट ये बोलेंगे नहीं, ये बोलेंगे कि अभी लाइफ में कुछ रखा ही नहीं, अभी क्या करूंगा. सो वी रिजाइन अवर सेल्व्स टू द वे थिंग्स आर. वी डोंट कंप्लेन और सीम पर्टिकुलरली अनहैप्पी. Instead, we shrug our shoulders. There's no point trying to change things. Pessimistic, जो एकदम डार्क माइंड रहता है, कुछ नहीं होने वाला इस दुनिया में, अभी कुछ होता ही नहीं है. There are many people talking about government. There are many people talking about politics. and say, अरे अभी तो क्या कुछ है ही नहीं, अभी जो गवर्नमेंट है वो तो कुछ नहीं है, जाने तो छोड़ दो, कुछ छोड़ने की बात ही नहीं, कुछ नहीं, फायदा ही नहीं, वोट भी करने का फायदा नहीं, ऐसे भी बोल देंगे. Because they are resigned. They don't want to do anything. They just don't. But positive में they can become happy go lucky, that they can come out of that wild rose feeling. Olive, I told you, tiredness, exhaustion, अपने एसिड फॉज जैसे एसिड म्यूरियाटिकम, ऑल ओवर एसिड्स वेयर देयर इज टू मच exhaustion, weakness, prostration आफ्टर द फिजिकल स्ट्रगल. रिमेंबर, आफ्टर फिजिकल या मेंटल स्ट्रगल के बाद थकान महसूस होना, थिंक ऑफ ऑलिव. बिफोर इवन मेहनत करने से पहले थक जाना, थिंक ऑफ हॉर्नबीम. हमने हॉर्नबीम के बारे में बात की थी कि ये लोग बहुत शुरू करने से पहले, अरे ये तो मेरे से होगा ही नहीं, जाने दो, छोड़ दो, ये मेडिकल की एग्जाम तो मेरे से होगी नहीं, मैं जाऊंगा ही नहीं. ऑन बीम, हाँ एग्जाम्स दी थी, पढ़ाई कर दी, और उसके बाद बहुत पढ़ाई करने और अभी मैं टायर्ड हो गया हूँ मेंटली और फिजिकली, थिंक ऑफ ऑलिव. आर यू गेटिंग इट?
So olive is after the effort is made, hornbeam is before the effort. This is how you subtly differentiate the flower remedies. Remember, this is very, very important. White chestnut, again, lot of thoughts coming. Anything repeatedly coming up. तो यही आपको पेशेंट में भी दिखेगा कि कोई कोई चीज वो रिपीटेडली कर दे. जैसे मैंने इसको ऑटिज्म में और बहुत सारे बच्चों में यूज किया है, जो रिपीटेड बिहेवियर्स करते हैं, फ्लैपिंग ऑफ हैंड्स करते हैं, गोल गोल फिरते हैं, एक ही चीज को देखते रहते हैं, एक ही चीज वापस वापस करना. जैसे ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, वही वही चीज वापस करना, हाथ धोना. ये कोई भी चीज जब वापस और वापस और वापस करते रहते हैं ग्रामोफोन के जैसे, या वापस वापस थॉट्स आते रहते हैं पीछे के, तो थिंक ऑफ व्हाइट चेस्टनट. सो व्हाइट चेस्टनट इज नॉट ओनली फॉर अनवांटेड थॉट्स एंड मेंटल आर्ग्यूमेंट जो वापस वापस आ रही है अपने दिमाग में, उसके वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही है. इसके लिए एक रेस्क्यू मिक्सचर है, रेस्क्यू प्लस व्हाइट चेस्टनट को मिलके हम लोग एक स्लीप ड्रॉप्स भी बनते. जो मुझे नींद नहीं आती, बहुत सारे थॉट, जैसे हमारा कॉफी है, because of lot of thoughts there is no sleep. So sleeplessness due to lot of thoughts, the first batch flower remedy that you will think of is white chestnut. Remember. हाँ, नींद क्यों नहीं आ रही है? थॉट्स की वजह से नहीं आ रही. थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, मुझे गुस्सा है इसके ऊपर, तो फिर वापस यू विल हैव टू डिसेक्ट द होल केस. रिमेंबर, डोंट जस्ट लुक एट द पेरिफेरी एंड गिव अ रेमेडी. होल केस लेके, केस के बिहाइंड एग्जैक्ट क्या फीलिंग है, कहाँ से ये फीलिंग आ रहा है, ये जानकर हमें रेमेडी करनी. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एनी ट्रबल दैट रिपीट्स और रिकर्स, cough, cold, fever, skin, repeated actions, flapping, running in circles, speaking the same thing, echolalia, या मेरी मेरी बीबी है, जब भी मैं घर जाता हूँ तो वही वही बातें करती रहती, ग्रामोफोन जैसे. नाउ रिमेंबर, हमें उनको देना नहीं कि आप अपने वाइफ को ये दे दो. जब तक आप वाइफ से बात नहीं करोगे तब तक आप दवाई दोगे, बिकॉज ही इज परसीविंग हिज वाइफ लाइक दैट. रिमेंबर, सो डोंट गिव हिम अ मेडिसिन, हाँ ये आप अपने वाइफ को दे दो. नहीं, ऐसा नहीं, बहुत गलत टाइप है. यू शुड नॉट गिव प्रिस्क्रिप्शन लाइक दैट. Talk to the person. Tell him that you bring your wife here and then I'll talk to her. This is very, very important because he is perceiving her like that. It is his perception. It is not her perception. Her perception may be totally different and some other remedy. Okay. Mustard. Again, deep gloom and depression, insufficient interest in present circumstances. Right? This is yet another we are talking of. Okay. So mustard is when you're not interested and when you're tired and when you are absolutely gloomy and depressed. But मालूम नहीं है क्यों हो रहा है, मुझे सैडनेस लग रहा है, पर क्या वजह है मुझे मालूम नहीं. सब कुछ अच्छा चल रहा है, घर अच्छा है, नौकरी अच्छी है, बीबी बच्चे अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर मुझे मालूम नहीं है सैडनेस कहाँ से आ रहा है. आई डोंट नो वेयर द सैडनेस इज कमिंग फ्रॉम. सो डिप्रेशन, सैड, ग्लूम कमिंग विदाउट रीजन, एंड मुझे किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है. Think of mustard. So depression के लिए mustard is a very important remedy along with gorse and gentian. Remember, we talked about gentian first time. Gentian, उसके बाद gorse, उसके बाद mustard. ये एक साइकिल जैसे साइकिल ऑफ रेमेडीज होती है, वैसे आपने वो सोचना है. रिमेंबर, चेस्टनट बर्ड, सीख नहीं पाते अपनी पुरानी मिस्टेक से. बहुत सारे लोग हैं बोलेंगे मैं हर बार वही मिस्टेक करता हूँ, नौकरी भी हर बार मैंने सेम वही चूज किया और जाकर मैं सोचता हूँ अरे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ. सो दोज पीपल हु डोंट लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, they keep committing the same mistakes again and again. They don't learn from the mistake of their life. They cannot apply. They give little thought to the past that they have failed to learn, and again they keep repeating the same thing. बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे पेशेंट ऐसे आएंगे, बोलेंगे कि I don't know, somehow I get entangled into the same thing again and again. Now यहाँ पे white chestnut नहीं, same thing again and again क्यों कर रहे हो, but सीख भी नहीं रहे हो उससे. व्हाइट चेस्टनट है, वो थॉट्स आएंगे या वापस करेंगे तो उसमें सीख भी होगी, उसको सीख मिलेगी. They may actually stop doing the same thing again and again. But chestnut bud will keep repeating the same mistakes again and again. So there are very small differences here and there, and again experiential. When you give the remedies, you'll know how they act. Remember, that's very, very. So that finishes what we did last time. Remember, overcare for welfare of others. Okay, and insufficient interest in present circumstances and oversensitivity to influences and ideas. This is just a gist of what we did last time, and I wanted to do this specifically because probably many of us were not able to see the recording, and the recording was due to some technical glitch was not done. So I hope you're clear with the module 2 now. Today what we did basically in the beginning was module 2 now. So now we will start with our module 3. Okay. Anybody has any questions can have quick questions on the chat if you want, or if you want we can do it at the end. So I hope you're clear with the module 2 what we did last time. It was a revision. We'll start with the module
3 now. Okay, good. So does it look like there's any other problem? Okay, so I think most of you are clear about what it is. So now I hope you'll be able to see them. Just remember one very, very important thing which I would like to say, and I'm sure all of you know this. The most important thing is when you select a flower remedy, don't just look at what the person is presenting to you. जो सामने दिखेगा face value पे मत लीजिए. Always talk to the person. Always find out what is the basic feeling. Always go behind the symptom. गुस्सा आ रहा है, डर लग रहा है, तो डर किस बात का है? डर की वजह से क्या हो रहा है? ये डर कहाँ से आ रहा है? गुस्सा आ रहा है तो किस इनसिक्योरिटी. द अदर डे वी वर जस्ट लुकिंग एट द सिम्टम इनसिक्योरिटी. तो इनसिक्योरिटी लग रही है, तो इनसिक्योरिटी क्या है? कहाँ से आ रही? तो इनसिक्योरिटी की वजह गुस्सा भी हो सकता है. इनसिक्योरिटी की वजह डर भी हो सकता है. इनसिक्योरिटी जेलसी की वजह से भी हो सकता है. तो ये बहुत जरूरी है. सो दिस बेसिक इमोशन जो एंगर, फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी, these basic emotions you should all know that they stem from some different feelings inside. Some different feelings and emotions are behind this. To find out those feelings, and then only you will get to the right remedy. Okay. Okay. So let's start with the Dr. Bakshi's Flower Remedies exclusive seminar webinar, Flower Remedies Module 3. So we have already finished with Module 1, Module 2 now. Today we have a very small kind of remedies remaining, but it's a very, very important group. Remember that, okay? It's all about Sir, Dr. Bakshi. Does not need any introduction. So today's group of remedies is the last group, which is known as despondency or despair. Now, last time also I have told you कि ग्रुप के हिसाब से याद रखना जरूरी नहीं है. इंडिविजुअल रेमेडी को याद रखना जरूरी है. इंडिविजुअल रेमेडी कब देनी है वो इंपॉर्टेंट है. कभी कभी what happens if we remember according to the group, then there are some points because there are many remedies that cross over in groups also. जैसे I give you the example of red chestnut, जिसमें over care भी है, but it is in the fear group. So sometimes there could be a confusion. So it is better to remember a remedy per se. हमें हमारी रेमेडीज को स्ट्रॉन्ग करना है. ग्रुप से याद कर सकते हैं तो इट इज ओके. अगर नहीं करना है तो नॉट रिक्वायर्ड. जस्ट रिमेंबर द रेमेडी. रेमेडी रिमेंबर द की नोट ऑफ द रेमेडी. जैसे रेड चेस्टनट का आपको मालूम है द की नोट इज ओवर केयर फॉर अदर्स. दैट इज रेड चेस्ट. व्हाइट चेस्टनट का क्या है? इट इज रिपीटेड थॉट्स कमिंग अप. ग्रामोफोन के जैसे मेरे दिमाग में थॉट्स आते रहते हैं. मैं थॉट्स को रुका नहीं सकता. उसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है. उसकी वजह से गुस्सा आ रहा है. पेशेंट तो बोलेगा कि मुझे गुस्सा आ रहा है, बट गुस्सा आने की वजह क्या है? मेरे दिमाग में ना ये जब से ये हुआ है तब से मेरे दिमाग में एक ख्याल घूमते रहते हैं और मुझे नींद नहीं आती. उसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है. तो आप गुस्से के लिए दोगे कि थॉट्स के लिए दोगे? आप थॉट्स के लिए दोगे. ये जरूरी. फाइंड आउट द इमोशन बिहाइंड. स्टोरी में मत घुस जाओ. द प्रॉब्लम इज द पेशेंट अपनी स्टोरी बोलता रहेगा. मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मैं यहाँ गया, मैं वहां गया. एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. स्टोरी सुनना बहुत मजा आता है. बट ना हमारे पास टाइम है ना पेशेंट के पास टाइम है. और हमें राइट रेमेडी निकालनी है. तो हमें स्टोरी सुनती, ठीक है स्टोरी तो सुननी है, पर स्टोरी में कहाँ पे मेन फीलिंग है, कहाँ पे मेन इमोशन है, वो ढूंढना है. So the first remedy in despondency despair is large, which is a very very important remedy. Lack of confidence है. ये despondency despair कहाँ से आती है? मैं बाहर जा नहीं सकता, मैं किसी के साथ बात नहीं कर सकता, मैं जब भी लोगों के सामने जाता हूँ तो मुझे डर लग रहा है. बटरफ्लाइज इन माई स्टमक. मैं जस्ट लाइक अवर सिलिका, जस्ट लाइक अवर जेलसीमियम, जस्ट लाइक अवर आर्जेंटम नाइट्रिकम. एंटीसिपेटरी एंजाइटी हो जाती है. डायरिया हो जाता है, मुझे पसीना छूट जाता है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है मेरे. मैं बोल ही नहीं सकता लोगों के सामने. ब्लैंक हो जाता हूँ एग्जाम में. Think of large, remember. This is a remedy for people who feel that they are not as competent as others. Remember, they feel, this is important, competent है, but सोचते हैं मैं competent नहीं हूँ.
They lack confidence in the ability. So the word of large is lacking in confidence in. जैसे मैंने कहा हर रेमेडी का कीवर्ड जानना है हम. So they lack confidence in their ability to do things. Assume they will fail and often don't bother to try. देखो उनको लग रहा है मैं फेल हो जाऊंगा और मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ. हॉर्नबीम में क्या होता है, मैं मुझे लेजीनेस आ गया, मैं आज नहीं करूंगा कल करूंगा. एल में क्या होता है, अरे इतनी सारी बड़ी चीज मैं करूं कैसे. तो आप देखिए लार्ज, हॉर्नबीम और एल, ये तीनों रेमेडीज कितने क्लोज आ रही. तीनों है वो नई चीज नहीं करेंगे. नई चीज करने को मुझे डर लगता है. पर डर क्या है, कहाँ से आ रहा है डर. क्या आप मिमुलस दोगे उसको, नहीं मिमुलस नहीं दोगे, क्योंकि डर उसकी बेसिक इमोशन नहीं है. उसकी बेसिक इमोशन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है. शुरू करने से पहले मैं डर जाता हूँ कर सकूंगा कि नहीं. थिंक ऑफ लार्ज. शुरू करते टाइम मुझे लगता है अरे इतना बड़ा पोर्शन मैं कैसे फिनिश करूंगा, मैं नहीं करता हूँ. थिंक ऑफ एल. और अरे मुझे ये नहीं करना है अभी, क्या रोज रोज वही करना है, अभी जाने दो मैं कल करता हूँ. थिंक ऑफ ऑन बी. तीनों लोग नई चीजों से डरेंगे. तो डर के लिए दवाई नहीं देनी है, डर के लिए बैच फ्लावर नहीं देना है, इधर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए देना है. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी आप तीन अलग अलग ग्रुप में तीन रेमेडीज है. इसके लिए मैं आपको कहता हूँ कि डोंट थिंक ऑफ द ग्रुप. सेवन ग्रुप्स आर गुड एज फार एज इफ यू कैन रिमेंबर, एंड द ग्रुप रेमेडीज यू कैन रिमेंबर, बट यू शुड नो वेयर द रेमेडीज इंडिकेट. We can contrast this with people in the elm state where it is a willingness to take on too much that causes the crisis. Are you getting it? elm में प्रॉब्लम ये होता है मैं ओवरवेल्म फील कर रहा हूँ. इतनी सारी चीजें कैसी होगी मेरे से. इतना अभी कल एग्जाम है और मेरे 4 चैप्टर्स बाकी है, कैसे होगा मुझसे. मुझे नहीं लगता ये मुझसे होगा. तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तो है, बट फीलिंग क्या है कि इतनी सारी चीज कैसे होगी. दैट इज द फीलिंग ऑफ एल्म. द रेमेडी हेल्प्स अस टू मूव अहेड रिगार्डलेस ऑफ थॉट्स ऑफ सक्सेस एंड फेलियर. कर्म तो करना है, राइट. फल की चिंता नहीं करनी. फल की चिंता करते रहेंगे तो कर्म करेंगे नहीं. तो कर्म तो करना है, तो वी हैव टू पुट एफर्ट्स. सक्सेस हो या ना हो वो तो बाद में देखा जाएगा, बट करना तो है. सो दिस इज द पॉजिटिव लार्ज फीलिंग. जो निगेटिव लार्ज में नहीं 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 मैं नहीं कर सकता, मुझे डर लग रहा है, मैं कर सकूंगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मैंने पढ़ाई तो की है पर मुझे मालूम नहीं मैं कर सकूंगा कि नहीं. ये फीलिंग है लार्ज की. पॉजिटिव लार्ज, लार्ज देने के बाद फीलिंग क्या होगा, ठीक है पढ़ाई तो मैंने की है, एफर्ट्स तो डाले, देखते हैं अभी क्या होता है, रिजल्ट तो मेरे हाथ में नहीं है. दिस इज द पॉजिटिव फीलिंग ऑफ लार्ज. सो ये जब तक ये पॉजिटिव फीलिंग नहीं आता है तब तक हमें लार्ज देना है. एक बार ये फीलिंग आ गया पेशेंट में, स्टॉप लार्ज. लार्ज ऐसे नहीं कि 7 दिन देना है, 10 दिन देना है, 15 दिन देना है. लार्ज ऑल्सो कुड बी अ मूड रेमेडी. रिमेंबर, टाइप रेमेडी होने का चांस कम है, क्योंकि जब ये एग्जाम आ रही है तो भी मुझे फीलिंग है, इंटरव्यू आ रहा है तो मुझे ये फीलिंग है, अदरवाइज लाइफ में ये फीलिंग नहीं. आर यू गेटिंग इट. सो दे आर मोर प्रिपेयर्ड टू टेक रिस्क एंड गेट इन्वॉल्व टू गेट मोर ऑफ और लीव. दैट इज द पॉजिटिव लार्ज, राइट. For those who do not consider themselves as good or capable as those around them, who expect failure, पहले से ही सोच के है कि मैं तो फेल ही होने वाला हूँ, who feel that they'll never be a success and so do not venture. So फेल होने वाला हूँ इसके लिए मैं नहीं करूंगा, ये लार्ज है. ये याद रखिए. आप क्यों नहीं ट्राई करते, आप क्यों नहीं मेडिकल एग्जाम देते, आप क्यों नहीं डॉक्टर के पास जाते. अरे नहीं मैं जाऊंगा तो वो तो यही बोलने वाले, तो फिर करने का क्या मतलब है. आर यू गेटिंग इट. दैट इज लार्ज. सो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सिर्फ मुझे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उसके लिए लार्ज देना, ये गलत बात. सो कभी कभी कीवर्ड पे भी जाना थोड़ा थोड़ा डेंजरस हो सकता है, बिकॉज कीवर्ड पे आप जाओगे तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है तो आपने लाज दे दिया. बट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का एक्सप्रेशन क्या है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का इमोशन क्या है, ये जानना बहुत जरूरी. क्यों ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है. नहीं मैंने पढ़ाई तो की है फिर भी मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैं फेल हो जाऊंगा. दिस इज लार्ज. ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट रेमेडी इज पाइन. अगेन डिस्पोंडेंसी कहाँ से आती है, डिस्पेयर कहाँ से आता है. बेसिक कीवर्ड गिल्ट है. नहीं जरूर कुछ मैंने गलती की, जरूर. सेल्फ कंडेमनेशन, रिमेंबर, जो ऑरम मेटालिकम में हम देखते हैं. सेल्फ रिप्रोच, सेल्फ कंडेमनेशन. हाँ, these are some of the rubrics that we know in our repertory, right? So it helps when we blame ourselves for things done or undone. मैंने, मेरे वजह से हुआ होगा, तुम फेल हो गए, मैंने तुमको सुबह उठाया नहीं इसके लिए फेल हो गए, तुमको तकलीफ हो रही क्योंकि मैंने तुमको ये खाना दिया है, तुमको तकलीफ हो रही क्योंकि तुम्हारी मेरे से शादी हुई है. तो दिस इज दैट गिल्ट फीलिंग which is continuously within you. Anxiety conscience as if has committed some guilt or as if committed some crime. So we have so many remedies in our homeopathy, remember. तो उसके साथ ये रेमेडी अगर देते हैं तो it will be excellent. Remember, in a pine state we may feel guilty even when events outside our control have caused a problem. किसी और के वजह से भी किया होगा तुम, नहीं नहीं मेरे वजह से हुआ है, मेरे वजह से हुआ है. बहुत सारे लोगों की आदत होती है, जो भी होता है दुनिया में वो मुझे लगता है मेरे वजह से हो गया, तुमने ऐसे किया तो मेरे वजह से हो गया, तुम फेल हो गए तो मेरे वजह से हो गए, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो मैं मेरे वजह से हो गया. सो दिस कंटिन्यूस फीलिंग ऑफ गिल्ट कैन बी टेकन केयर ऑफ. We sometimes feel so guilty in pine state that we end up saying sorry all the time.
The positive aspect of pine is seen when we acknowledge our faults without dwelling on them. ठीक है यार, गलती हो गई, मान लिया मैंने, हो गया, उसके बारे में कंटिन्यूसली सोचते नहीं रहूंगी, कंटिन्यूसली ड्वेल नहीं करते रहूंगी कि मेरे वजह से हुआ, मेरे वजह से, एंड देन आई विल अंडरमाइन माई हेल्थ. आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. बट एट द सेम टाइम वी नो दैट वी आर ब्लेमलेस, वी हैव डन आवर बेस्ट एंड आर कंटेंट. बस उसके बारे में सोचते नहीं रहना है. तो गिल्ट फीलिंग, नाउ रिमेंबर इट इज इजियर सेड दैट वी आर ब्लेमलेस, वी हैव डन आवर बेस्ट. लोग ऐसे नहीं आते, पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो बहुत डीप सीटेड गिल्ट में आते हैं. बहुत, आई हैव रॉन्ग माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स की मेरे से ये एक्सपेक्टेशन थी और मैंने नहीं किया तो मुझे बहुत गिल्ट फीलिंग हो रहा है. मैंने शादी इसके साथ की, पेरेंट्स चाहते थे उसके साथ शादी करूं, गिल्ट फीलिंग हो रहा है. और उनका पूरा लाइफ उसमें ये हो जाता है. तो यू हैव टू रियली understand the patient completely, understand the person completely, go behind the emotion. I'm again and again saying this. This is very, very important because I've seen many failures in my own practice when I just look at the emotion and give a remedy. It's very, very tempting कि anger के लिए मैं ये दे दूं, fear के लिए ये दे दूं. कभी कभी ऐसा लगता है batch flowers बहुत simple है, but it is not. You have to understand batch flowers to the core. Then only you'll understand. Read batch flowers from all the books that are available. Remember, एक अच्छा blessing batch flowers का है कि बहुत सारे लोग freely लिखते हैं batch flowers. But again, it is a again there is a problem there that people write any and everything about batch. So we should, kind of, stick to authentic literature only. Authentic literature from authentic background, from authentic websites. Look at those literatures rather than looking at all the literature. Remember, there is so much available of batch flower. Remember. So guilt होगा तो the first remedy is fine. Remember, but guilt कहाँ से आ रहा है? Guilt का expressions क्या है? Guilt का emotions क्या है? Go behind that. Don't just look at the word guilt. Remember. Next remedy is elm. Elm, how do I remember? Overwhelmed. एल्म का मतलब ओवरवेल्म. कोई भी चीज आने से आ रही और आते ही इतनी बड़ी दिखेगी. इट्स लाइक दूर से हमें कोई एक ट्रक दिख रही है, वो बहुत छोटी लग रही है, बट नजदीक आती है तो ट्रक इतनी बड़ी दिखती है. तो कोई भी काम जो हमें लग रहा है दूर से बहुत छोटा है, पर नजदीक आते ही, अभी कल एग्जाम आ गई है और मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, कैसे मैं एग्जाम दूंगा, कैसे पास हो जाऊंगा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी है इसमें. एल्म में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी है, लार्च में भी कॉन्फिडेंस लैक ऑफ. So you have to differentiate. So it is a remedy for people suffering from temporary loss of confidence due to overwhelming amount of responsibility, too much responsibility. Like somebody dying in the house. Maybe there are two, three, maybe there is one son who's an older son and there are three, four daughters, three, four siblings. And the earning member, the dad, he dies suddenly of a heart attack or a CV or a stroke or something. The whole responsibility comes on him. पूरे घर की मुझे responsibility. आर यू गेटिंग इट? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कर सकूंगा कि नहीं? इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना बड़ा स्टोन आ गया, अभी क्या करूं, कैसे इसको पकड़ू, कैसे इसको पुश करूं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So temporary loss of, now remember it is temporary because these are able people. ये able people है, large के जैसे ही है. They are able people, they'll be able to do it. But एक temporary loss of confidence हो जाता है due to overwhelming amount of responsibility they have taken. Genuine elm types are the people who are successful carrying out work they believe in, but at times the burden brings them down and they feel that they cannot go perfect. This is very, very important. ये फीलिंग है उनका कि मैं कर सकूंगा कि नहीं, मुझे लग रहा है करूंगा तो जरूर और करेगा भी जरूर. और फीलिंग एक टेम्पररी फीलिंग है कि भाई होगा कि नहीं, अरे क्या इतना बड़ा लोड आ गया, अभी मैं करूंगा कि नहीं. और उसके बाद से मुझे माइग्रेन शुरू हो गया, उसके बाद से मुझे नी पेन शुरू हो गया, उसके बाद से मुझे एसिडिटी शुरू हो गई. तो पेशेंट तो आने वाला है एसिडिटी से, पर कॉज क्या है? मेरे डैड ही एक्सपायर्ड सडनली, सडनली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई. फिर मैंने सोचने लगा मैं ये सब कर सकूंगा क्या, इतना बड़ा बिजनेस कैसे देखूंगा मैं अकेले. उसके बाद मुझे एसिडिटी शुरू हो गई. आर यू गेटिंग इट? सो ही इज कमिंग टू यू विद एसिडिटी, ही इज गिविंग यू एलिमेंट्स फ्रॉम, ही इज गिविंग यू द एग्जैक्ट इमोशन बिहाइंड इट एंड नाउ यू हैव टू गिव द रेमेडी. So anybody can come to you with any physical problem, but don't just stick to the physical problem. Don't give rubenia, don't give lycopodium, don't give nux vomica क्योंकि उसको acidity हुई, because it will not act the way. Are you all getting it? The responsibility आ गई है, मैं ले सकूंगा कि नहीं, पास हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, that is important. The elm state can usually be contrasted with large. ये बहुत जरूरी है. Elm और large साथ में चलते हैं, दोनों में lack of confidence है. But people in elm take challenges willingly and only occasionally doubt their ability. Depending upon the load. अगर बहुत सारा लोड है तो कैसे लूंगा, छोटा मोटा लोड है, रोज का काम है, वो तो मैं कर रहा हूँ.
लार्ज का प्रॉब्लम है कोई भी चीज करते हो तो उसको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. आर यू गेटिंग इट? सो इट्स द स्केल ऑफ टास्क रादर देन द डिफिकल्टी ऑफ डूइंग समथिंग वेल that causes the crisis. Large people are convinced they are going to fall right from the start. मेरा होने ही नहीं वाला मेरे से, कुछ भी हो मुझे होने ही नहीं वाला है. 4 लोगों में जाना भी नहीं होगा, 2 लोगों में एक आदमी से भी मेरे को बात करने नहीं हो रहा है. बट व्हाट विल एल्म से? ठीक है, 1-2 आदमी से तो मैं बात कर सकता हूँ, बट एकदम बड़े 300 के क्राउड को बोलना मुझे होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं. आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन लार्ज एंड एल्म? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, so large will not try only. Elm will try. Remember, Elm they know that they are capable. They'll try. Large also know they are capable, but they will not try at all. Remember, that is the difference between large and Elm. So both are for lack of confidence, but that is how you differentiate between Elm and large. Those who are doing good work, following the calling of life, who hope to do something important, is often for benefit of humanity. At times, there may be periods of depression when they again depressed feel करता हूँ. तो डोंट थिंक ऑफ मस्टर्ड गोर्स. हाँ, डिप्रेशन की रेमेडीज, हाँ तो मस्टर्ड होगा, गोर्स होगा, जेंशन होगा. देखो मस्टर्ड, ये डिप्रेशन की रेमेडी कहाँ पे आ गई? एल्म में आ गई. क्योंकि डिप्रेशन कहाँ से आ रहा है ये इंपॉर्टेंट. डिप्रेशन के लिए दवाई नहीं देनी है. डिप्रेशन कहाँ से आ रहा है? हमारे घर में किसी की डेथ हो गई, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आ गई. अभी मैं ले सकूंगा कि नहीं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी? उसके वजह से मैं सैड हूँ, उसके वजह से मैं डिप्रेस हूँ, उसके वजह से मैं गुस्सा हूँ. तो गुस्से की रेमेडी नहीं देनी है. कहाँ देना है? हमें एल्म देना है. और एल्म हम लोग गुस्से के लिए सोच ही नहीं सकते कभी, क्योंकि एल्म में गुस्से का सिम्टम नहीं है. बट गुस्से के लिए एक सोर्स है जो गुस्सा करवाता है. तो इसके लिए गुस्सा देखना जरूरी नहीं, गुस्से के पीछे जाकर देखिए कि फीलिंग क्या है. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, घर में कोई डेथ हुई है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैं कर सकूंगा कि नहीं, वो फीलिंग है. और उसके वजह से मुझे गुस्सा है, उसके वजह से मुझे एसिडिटी हो गई. फिर मैं ये नहीं सोचूंगा अरे गुस्से वाला आदमी है और एसिडिटी हो रही है, इनफेक्चुअल अर्ज है, तो उसको मैंने नक्स वोमिका दे दिया. नक्स वोमिका विल नॉट एक्ट लाइक, डजंट वर्क लाइक, है ना. दैट इज इंपॉर्टेंट. हाउ द रेमेडी विल वर्क एंड व्हाट द रेमेडी विल डू, we have to predict. Remember, I remember even one of our teachers, Dr. Vijay Gar, he started something called predictive homeopathy. Predictive homeopathy का क्या है? हमें predict करते आना चाहिए. I should know what my medicines or what my flower remedies are going to do to the patient, and I should be confident enough to tell the person opposite me कि ये लेने के बाद आपको ये feelings होंगे, ये positivity में आप आ जाओगे. This is the confidence that we need to. Because when I was doing the batch flower course also, the most important thing about the batch flowers is, or the flower remedies is that you should tell the person, ये आप remedy क्यों दे रहे हैं? Now this is important because this is how ethically flower remedies act. You have to tell the person that, remember, I think whatever you say is ये मुझे लग रहा है और मैं अभी आपको ये रेमेडी दूंगा, इसके वजह से ये होगा. That is important. अगर वो समझ सकते हैं तो ठीक है, नहीं समझ सकते तो मत बताइए, बट बोलना जरूरी है. Make them understand what your remedy is going to do. That's very very important. Okay? Next remedy, sweet chestnut. Sweet chestnut माने बस reach the limits of endurance. They are again in despondency, despair feeling कि अभी बस आगे कुछ हो नहीं सकता. गोर्स के जैसा hopelessness, एक hopelessness है इनमें भी, sweet chestnut में भी है. Is the remedy for people who have reached the limits of endurance. They have explored all the avenues, see no way out of their difficulties. They feel there's nothing left for them but annihilation and emptiness. Whereas people in a gore state decide to give up when there are possible solutions untried. Remember that. गोर्स में और स्वीट चेस्टनट में क्या फर्क है? गोर्स करते करते किसी को कैंसर हो गया है, ठीक है, फैमिली में कैंसर हो गया है, तो इसने ये इलाज किया, वो इलाज किया, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, ये किया, वो किया, और भी बहुत सारे इलाज है. बट एट अ पर्टिकुलर टाइम गोर्स विल से नहीं बस यार अभी नहीं करना, बहुत हो गया, अभी आई एम होपलेस, कुछ हो ही नहीं सकता. आर यू गेटिंग इट? While sweet chestnut will go through all the possibilities, पूरे दुनिया की possibilities, and ultimately, when there is no light at the end of the tunnel, they will feel totally despondent. That is the difference between gores. So gores के बाद sweet chestnut की state आती, remember that. So you should know how one remedy state can go into another. This is how you can learn flower remedies, because they are up to, जैसे जेंशन है, एक टाइम में फेल हो गया, उसके बाद मुझे बस अभी ट्राई नहीं करना है. ठीक है, 3-4 लोगों ने बोला अरे करो करो करो. जैसे देर इज अ मूवी कॉल्ड 12th फेल, बहुत अच्छी चल रही है अभी, और उसको मुझे अवार्ड्स वगैरह भी मिले हैं, तो वो देखना बहुत जरूरी है. उसमें एफर्ट्स कैसे डालता है आदमी, कंटिन्यूसली एफर्ट्स डालते डालते रहता है. कहीं पे डिस्पेयर आता है पर डालता है, डिस्पेयर आ रहा है पर डाल रहा है, लाइक जेंशन.
एक टेम्पररी सेटबैक से भी वो पीछे हटता नहीं, ठीक है। गोर्स है वो ट्राई करते रहेगा और एट अ पर्टिकुलर टाइम से अभी कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, पॉसिबिलिटीज अभी भी है, क्योर अभी भी है, बहुत सारी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बट वो अभी टायर्ड हो गया, अभी नहीं करूंगा मैं। बट स्वीट चेस्टनट है, सब कुछ करेगा, पूरा सब कुछ छान लेगा पूरा, फिर नहीं होता तो वो डिस्पॉइंटेड हो। So the difference between goals is that people decide to give up when there are possible solutions untried. The person in sweet chestnut state is genuinely at the end of the life. Final despair. Remember. So final despair के लिए sweet chestnut है. The word remember is resignation. In this extreme state, the remedy helps us remain master of our life and renew our hope and strength. तो एक hope देती है remedy, एक positivity देती है, एक optimism देती है remedy. समटाइम्स अ वे अहेड में ओपन इवन व्हेन वी एक्सपेक्ट द लीस्ट। तो ये पेशेंट को लगना चाहिए या पर्सन बोलना चाहिए कि हाँ ऐसा मुझे लगता है कि अभी हाँ कुछ इलाज है, मेरे इस प्रॉब्लम के लिए इलाज है, जबकि उसने टोटली सब कुछ छोड़ दिया था, नहीं करूंगा मैं, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, सब कुछ ट्राई कर लिया, अभी कुछ नहीं हो सकता, मैंने सब छोड़ दिया डॉक्टर साहब, मैं कुछ नहीं ले पाया, कुछ नहीं होने वाला है। दिस इज स्वीट चेस्ट डिस्पॉन्डेंसी है, फाइनल डिस्पेयर है। उस टाइम अगर आप उसको स्वीट चेस्टनट देते हो तो आपकी जो होम्योपैथिक दवाई है या आपकी जो दवाइयां हैं वो और लेगा, ही विल ट्राई सम मोर ऑप्शंस। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। देखो ठीक होना या नहीं ठीक होना दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज ही विल ट्राई द ऑप्शन, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो स्वीट चेस्टनट विल open the doors so that he will see some options in life, he will see the light at the end of the tunnel, not that the tunnel is completely dark and I'm at the end of the tunnel. No, not like that. Okay. For those moments which happen to some people when the anguish is so great as seems unbearable, when the mind or the body feels as if it had borne to the utmost limit of its endurance, when it seems there is nothing but destruction and annihilation, final, खलास हो गया, अभी कुछ मैं कर ही नहीं सकता, this is sweet chest. सो काइंड ऑफ ब्रिंग स्वीटनेस इन योर लाइफ, रिमेंबर। जो एक बिटरनेस आ गया है कि कुछ नहीं है लाइफ में, कुछ नहीं हो सकता, मैं अभी सब कुछ खत्म हो गया है, तो आई रिमेंबर स्वीट चेस्टनट लाइक दिस, दैट इट ब्रिंग्स सम काइंड ऑफ अ स्वीटनेस, इट काइंड brings about optimism, it opens a door that there are some options available. स्टार ऑफ बेथलेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइसिस फॉर्मूला की रेमेडी है। रिमेंबर द रेस्क्यू रेमेडी जिसमें 5 रेमेडीज है, स्टार ऑफ बेथलेम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एलिमेंट्स फ्रॉम शॉक, नाउ देयर इज अ रूब्रिक इन आवर रेपर्टरी, एलिमेंट्स फ्रॉम शॉक, मेंटल शॉक, फिजिकल शॉक, जो भी शॉक हो, सडन डेथ ऑफ समबडी और शॉक लग गया, नंब हो गए, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, जब से मैंने ये एक्सीडेंट देखा तब से मेरा ये सरदर्द शुरू हुआ है, जब से मैंने ये बॉम्ब एक्सप्लोजन सुना है, जब से मैंने ये बॉम्ब एक्सप्लोजन देखा है, जब से मैंने ये एक्सीडेंट देखा है, जब से मैंने वो देखा है, तब के बाद मैं इतना शॉक हूँ कि ये सब प्रॉब्लम अभी से शुरू हो गए। मेरे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम शुरू हो गए, मेरे हेडेक शुरू हो गए, मेरा आर्थराइटिस शुरू हो गया, मेरा हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो गया, मुझे अस्थमा शुरू हो गया, मुझे ब्रेथलेस कॉफ शुरू हो गया। एनी प्रॉब्लम स्टार्टिंग फ्रॉम शॉक, बैड इफेक्ट्स ऑफ शॉक, think of Star of Bethlehem. Very, very important remedy. It is a remedy for after effects of shock, such as caused by unexpected bad news. Think of our agnasia, think of our natramute, think of our gelsimum, think of acid falls, bad effects of bad news, or unexpected unwelcome event. It can be used as well for effects of shock received many years ago, even in early childhood. So, very, very important remedy for post-traumatic stress syndrome, Star of Bethlehem. Very, very important remedy for abuse in childhood, getting again those flashbacks, PTSD, one of the most important remedy for Star of Bethlehem, leading to a lot of crisis, lot of panic effects, lot of panic attacks. This is also the remedy for the sense of emptiness and loss that sometimes occurs when a loved one dies. Like in old people together, they're living for 50 years, 60 years, 70 years, they have been living together, and one partner dies. What will happen to the other partner? Totally numb, shocked. जिंदगी एम्प्टी हो गई, अभी मेरी जिंदगी में कुछ नहीं, एम्प्टीनेस सिंड्रोम। बच्चे पढ़ाई लिख के पढ़ाई किया, पढ़ाई एकदम अच्छी पढ़ाई वगैरह हुई, दोनों चले गए फॉरेन कंट्री में रहने, बूढ़े माँ बाप बेचारे यहाँ पे रह रहे हैं, एंड दे आर फीलिंग सो लोनली, दे आर फीलिंग सो अलोन। नाउ रिमेंबर, लोनली अलोन फीलिंग के लिए नहीं है स्टार ऑफ बर्थली, शॉक के लिए। जब से वो गए हैं तब से मुझे ये लगा है कि क्या होता होगा, अगेन रेड चेस्टनट भी आ सकता है, कि ओवर केयर है उनका, चिकोरी भी आ सकता है, पॉजिटिवनेस है, आर यू गेटिंग इट, एंगर भी कहीं पे है, इमोशंस बहुत सारे हैं,
बट प्रॉब्लम ये था कि जब से वो यहाँ से गए तब से मुझे ये प्रॉब्लम हो गया. इट वाज लाइक अ शॉक टू मी. स्टार ऑफ इट. समवन डाई, समवन मूव्स अवे. यहाँ पे एडजस्टमेंट प्रॉब्लम भी हो सकता है. इतने साल में बच्चे और बहू के साथ रही, बच्चे और बहू चले गए, अभी अकेली हो गई हो, एडजस्ट नहीं कर पा रहे. तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. कहाँ पे प्रॉब्लम है वो इंपॉर्टेंट है. एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो, यू कुड थिंक ऑफ वॉलनट. रिमेंबर दैट. आर यू गेटिंग इट? अभी मुझे लगता है अभी दुनिया में कुछ नहीं रहा है. एवरीथिंग इज डार्क. स्वीट चेस्टनट भी हो सकता है. So you see, for a single emotion, for a single feeling, for a single perception of an illness, there could be many, many flower remedies. There is nothing like ये remedy इसके लिए, ये remedy उसके लिए. ऐसा नहीं है flower remedy. So it's not as easy as we think. Remember that. And I'm not trying to demotivate all of you, but it's very, very important that we study these remedies in detail and not take it casually. Remember, it's not very simple that a emotion ले लिया और दे दिया. It won't act like that. It doesn't act like that. And then we get disappointed. Then, as usual, human tendencies, you know, these remedies they don't work, and that is how remedies get back name. That's how generally any pathy can get back name. Until if we don't try, it's never the pathy is wrong. Even remember, the pathy is never wrong. So, Star of Bethlehem is a comforting remedy to take in such circumstances. I hope you have understood what is Star of Bethlehem. For those in great distress under conditions for a time producing great unhappiness, shock of serious news, loss of someone dear, fright following an accident. So remember, there is something called fear of right remaining. So opium is one of our most important remedies in homeopathy. So yeah, also this comes close very, very to opium, Star of Bethlehem, gelsemium, ignatia. These are important. So bad effects, ailments from, you can look at that. Willow. विलो इज ऑल अबाउट रिसेंटमेंट. उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे बहुत गुस्सा है, दिमाग से ही नहीं जाता, उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया है. बिटर फीलिंग. द की वर्ड फॉर विलो इज रिसेंटमेंट एंड बिटरनेस. रिमेंबर, इज फॉर पीपल हु फील रिसेंटफुल, बिटर अबाउट द वे देयर लाइव्स हैव गॉन. ऑलवेज कंप्लेन करना, ऑलवेज बिटर रहना. दुनिया ने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं कभी माफ नहीं करूंगा उसको, उसने मेरे साथ ऐसा किया है. तो देर आर पेशेंट्स हु कम टू अस ग्रम्बलिंग एंड कंप्लेनिंग ऑल द टाइम. And Ate, one of the most important remedies with such bitter feeling coming to us is arsenic. Remember, I could correlate whenever I read willow. I think of arsenic because a lot of that thing is on their face. पूरा resentment से भरा हुआ चेहरा रहता है. कभी भी कोई भी arsenic patient आपके पास खुशी से नहीं आएगा until unless you give him arsenic. But जब arsenic आता है तो there is lot of irritability on the face, lot of bitterness on the face. पूरी दुनिया मेरे against है. सब लोग मुझे तकलीफ देते हैं. This is the feeling, and that is the basic feeling of willow also. In a willow state, we begrudge others their success and happiness and are reluctant to admit when our own lives go well. ठीक है, हाँ, अरे आपकी भी तो लाइफ अच्छी चल रही है. क्या अच्छी चल रही है यार? मेरे पास तो एक ही गाड़ी है, उसके पास देखो दो दो गाड़ियां है. वो दूसरा मेरा फ्रेंड है, उसको चार गाड़ियां है. मैंने क्या किया लाइफ में? कुछ नहीं किया यार. क्या उन्होंने सब कुछ किया है? दिस इज द काइंड ऑफ बिटरनेस इन योर लाइफ. विलो विल ट्राई टू मेक यू मोर स्वीटर एंड वुड मेक यू मोर एक्सेप्टिंग कि जो भी तुमने किया है वो अच्छा किया. कंटेंट करेगा तुम. They are reluctant to admit. We prefer to grumble and prone to resentment and self-pity. Rather than looking at what good I have done, I will always think उसने मेरे से अच्छा किया है, उसकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, उसके पास ज्यादा पेशेंट है, मेरे पास तो चार ही पेशेंट आते हैं, उसके पास 40 पेशेंट आते हैं. This is the kind of resentment willow has. Remember, this is the kind of willow. एक नेबर दूसरे नेबर के बारे में ये बात करेगा, एक कलीग दूसरे कलीग के बारे में बात करेगा. And this will be the gist of the matter. Remember, whenever you are taking the case, a willow will be completely complaining and grumbling until unless you really feel, अरे बस करो भाई, कितना ग्रम्बल करोगे, कितना कंप्लेन. दुनिया खराब है, मिनिस्टर खराब है, पॉलिटिक्स ये है, सब कुछ खराब चल रहा है और इसके लिए मेरी लाइफ खराब हो गई. दैट इज द रिसेंट. The remedy encourages a rebirth of optimism and faith. It helps us feel more generous towards others and more aware that negative thinking can attract the very ill fortune of which we complain. So that is the positive state of willow, remember. So हमें उस नेगेटिव विलो को पॉजिटिव विलो में कन्वर्ट करना है और हमारी विलो रेमेडी उसको कन्वर्ट करेगी, जरूर कन्वर्ट करेगी. वो पॉजिटिव एटीट्यूड देखने लगेगा, लोगों में पॉजिटिव देखने लगेगा. यार उसके पास पेशेंट आ रहे हैं, ठीक है, मैंने अभी सोचा कि यार वो स्पेशलिटी करता है, हाँ उसकी ट्रीटमेंट भी अच्छी है, रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, मेरे इतने रिजल्ट्स ठीक नहीं है, इसके लिए शायद मेरे पास लोग. ये आपको देखना है, ये आपका एक पॉजिटिव फीडबैक है और एक पॉजिटिव फॉलो अप है आफ्टर अ ब्लैक फ्लावर.
ये तुरंत तो नहीं आएगा, but you will see this. Remember, you will see this in the person's attitude. Okay? देखिए, look at this person, how he's looking. Look at his child. So a lot of resentment, even in children, anger, resentment, bitterness, grumbling, complaining, temper tantrums. Think of below. Remember, okay? They always feel ill-treated, unjust. Remember that. मेरे साथ injustice हुआ है. They are not the ones who will fight for injustice like Verwin, remember. But they will keep on grumbling, complaining, and not doing anything. Are you getting it? Verwin will actually go out and fight for injustice. Verwin will do a lot of things for others. Verwin will never go into resentment. Verwin is too enthusiastic, remember, for others, remember. Next remedy is oak. छोड़ूंगा नहीं, मैं ट्राई करते रहूंगा, कुछ भी हुआ तो मैं ट्राई करूंगा, कैसे भी सिचुएशंस आए, पूरा मैं डूब भी गया तो भी मैं कुछ ना कुछ करूंगा. That is the most, that is the attitude of oak. Never give up the attitude. That is very, very important. There are many movies that we see of cricketers and hockey players and football players. There was one person who left his, who broke his leg. There was a movie on hockey or something. He had paralysis. Yes, yes, paralysis. But still he fought. He came back. He practiced करके. The recent movie of Goomer where she loses her hand. Have you all seen that movie? She loses her hand. This Abhishek Bachchan and one more actress is there. She loses her hand, but she still comes back into cricket and bowls, even bats, even with one hand. Now that is the kind of thing that Oak is. Determination, पूरा determination है. सब कुछ situations पूरी एकदम खराब हो गई है, फिर भी I'll fight. So the rubric here with homeopathy is high spirited. Remember, हमारे होम्योपैथी में एक रूब्रिक है हाई स्पिरिटेड. ओक इज हाई स्पिरिटेड. Strong, steady people who never give up under adversity. They plow on with determination and never consider resting until they are past the point of exhaustion. Oaks. You know the oak tree, right? Oak tree is also like that only. Remember, oaks often have many people relying on them. Their sense of duty is very, very strong. They may feel frustrated and unhappy if illness or exhaustion means they are forced to do less than they wanted. जब से मुझे ये माइग्रेन हो गया तब से मैं लोगों के लिए काम नहीं कर सकता हूँ. मैं अपने काम पे नहीं जा सकता हूँ. मैं लोगों के लिए ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता. इलनेस के वजह से मैं रुक गया हूँ जो मुझे रुकना नहीं है. दैट इज ओक. रिमेंबर, so much is positive about oak person, but the negative side is stubborn refusal to rest. मैं रेस्ट नहीं करना चाहता. These people will never rest at home. They'll just keep on working for others, for humanity. For now, this comes close to rock water. Remember rock water. But rock water में circumstances खराब नहीं हुए हैं. सब कुछ ठीक चल रहा है और लोगों के लिए कर रहे, करते जा रहे. ओक में उनकी खुद की सिचुएशन खराब हो गई है, फिर भी दूसरों के लिए काम कर. दैट इज इंपॉर्टेंट. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ओक एंड रॉक वाटर. दोनों दूसरों के लिए बहुत काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं. बट एक के सर्कमस्टेंस कम हो गया, एक का सर्कमस्टेंस नॉर्मल है और काम कर. दैट इज इंपॉर्टेंट. They never rest or sit back when the need for rest is obvious. The remedy is used to help us remain strong in adversity, while at the same time we learn it is better sometimes to let go rather than crack under the strain. कभी तो रेस्ट करनी चाहिए, कभी तो कुछ आराम करना चाहिए, कभी तो अपने फिजिकल बॉडी को रेस्ट करना है, माइंड को रेस्ट. नहीं नहीं, कंटिन्यूसली मुझे काम करते रहना, लोगों के लिए करना है, करते रहूंगा. Oak, positive oak क्या होगा? Negative oak is not bad. They are doing good for people, but doing good at the cost of their health, at the cost of their calm, peace. ये छोड़ के अगर करना है, take care of your health also and do good for people. That is the positive oak that we are looking at. Remember, okay? So look at this guy with the huge stone trying to take the stone up. Now it is so difficult. एक तो uphill task है, स्टोन इतना हेवी है, फिर भी आदमी ऊपर उसको धक्का मार रहा है. उसका मतलब ये ओक है. Remember. For those who are struggling and fighting strong to get well or in connection with the affair, मैं सब कुछ ट्राई करूंगा. मेरे पास पैसे नहीं है, कैंसर है, तो मैं कहीं ना कहीं जाऊंगा. आई विल ट्राई फॉर डोनेशंस. I will try for this. I will try for that. I will try to meet some politician. I will try to meet some institute, some NGO. I will try. Keep trying. छोड़ूंगा नहीं मैं. They'll fight on. They are discontented with themselves if illness interferes with their duties. तो आपका मेन कंसर्न क्या है? आपको ये इलनेस है, माइग्रेन है, बहुत सारा माइग्रेन होता है, मुझे बहुत दर्द होता है, मैं कुछ कर नहीं सकता. I can give you the example of Sadhguru now.
Sadhguru, he had a massive hemorrhage or a hematoma, something pressed on the brain, and it went to the other side. There was a shift, and he was so much in pain, but still he was doing his pravachan and meetings. He did the Mahashivratri function even when he was down with severe headache, and he was dancing and talking to the people. And everything. What is this? What is this called? This is called perseverance, pertinacity, obstinacy. तकलीफ है फिर भी करते जा रहा हूँ करते जा रहा हूँ करते जा रहा हूँ करते जा क्या हो गया अल्टीमेटली टू लैंड अप इन हॉस्पिटल are you getting it are you understanding these people these are the kind of people that we are looking for they are brave people fighting against great difficulties without the loss of hope or effort okay last most important remedy in this group is crab apple जो बहुत बहुत important है and जब तक ये फीलिंग ना हो उस आदमी को कि मेरे ब्लड में कुछ खराबी है मेरे बॉडी में कुछ खराबी है something disgusting in me which is the cause of this illness somebody coming to you with psoriasis somebody coming to you with vitiligo somebody coming to you with migraine somebody coming to you with arthritis डॉक्टर साहब मेरे ब्लड में कुछ खराबी है क्या मुझे ऐसे लगता है कि मेरे ब्लड में कुछ खराबी है मेरे बॉडी में कुछ खराबी है इट इज डिस्गस्टिंग ये इलनेस मुझे बहुत गंदा फील करवाता है कहीं पे भी मैं जाता हूँ लोगों के सामने तो मुझे गंदा लगता है मुझे हाथ मिलाने को गंदा लगता है आई आई यूजली कवर अप माई हैंड्स मुझे यहाँ पे सोरियाटिक पैच है विटिलिगो है तो मैं कवर करता हूँ क्यों क्योंकि मुझे गंदा लगता है लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में मेरे बारे में क्या सोचेंगे मैं गंदा हूँ आई एम बैड सो दिस फीलिंग इस फीलिंग को हमें क्रैब एप्पल देना है so crab apple should not be abused only for skin problems or anything like that yes it is also available in rescue with crab apple for skin problems and it does work as local application also remember that but अगर ये फीलिंग होगा तो 100% एक्ट करेगा फीलिंग नहीं होगा तो आई डोंट नो मे बी एक्ट 50% करेगा 40% करेगा बट दिस इज नॉट व्हाट वी वांट 100% क्योर अगर क्रैब एप्पल आपको देना है तो ये फीलिंग होना चाहिए दैट आई फील डिसगस्टेड आई फील अब्यूज आई फील डर्टी जो हमारे लैक कैनेनम में है लैक कैनेनम का फीलिंग है डर्टी अब्यूज फीलिंग पूरा का फीलिंग है अबेंडेंट अब्यूज ब्लूज फीलिंग यू नो so it's known as a cleansing remedy and as such is added as a sixth ingredient in the cream version of Dr. Bach's original crisis formula. Its main use is to help people who dislike some aspect of their appearance or personality and feel that they have something unclean or poisonous about them. Sometimes, in a crab-apple state, we disregard genuine problems and concentrate obsessively. तो ऑब्सेशंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है मेरे हाथ खराब है तो मैं धोता रहता हूँ ओसीडी के लिए क्रैब एप्पल बहुत अच्छा है on one thing that we are fixed on sometimes a quite minor aspect of the whole we might take crab apple to cleanse the obsessive repetitive behavior so I could think of giving a white chestnut and a crab apple for OCD remember that but ये OCD कहाँ से आ रहा है that is also important find out from where it is coming so we might take crab apple to cleanse obsessive repeated behavior such as hand washing rechecking appliances are unplugged and so on and so forth remember that okay look at this lady now she's actually I mean in a muck and all over she's become dirty but that flower crab apple may the lady may look absolutely okay but the feeling is that I have become dirty are you getting it this is the most important feeling so abuse in childhood also think of abuse in childhood and still there is a lot of PTSD lot of panic attacks with the same feeling that I am still dirty कुछ ना कुछ मेरे में problems है and if I want to get rid of that feeling patient coming this recently I read for in some batch flower book about crab apple that to get rid of the problem if the patient says मुझे मैं चाहता हूँ ये प्रॉब्लम निकल जाए बस निकलना चाहिए कैसे भी think of crab apple so getting rid of the problem patient wants to get rid of the problem think of crab apple so this is a remedy for cleansing so cleansing means inner cleansing remember so even addiction के लिए बहुत अच्छी है somebody who has been taking alcohol or drugs for a long time and the feeling is अरे मैं इतने सालों से अल्कोहल ले रहा हूँ ऐसा लगता है अंदर सब खोखला हो गया अंदर सब कुछ खराब हो गया है मेरा सिस्टम खराब हो गया है मेरा ये जब बात करेगा तो क्रैब एप्पल विल वर्क वंडर्स नाउ okay for those who feel as if they have something not very quite clean about themselves often it is sometimes apparently little importance in others there may be some serious disease which is almost disregarded compared to one thing on which they concentrate in both times they are anxious to be free from the particular thing which is greatest in their mind and which seems so essential to them that it should be cured they become despondent if treatment fails being a cleanser
The remedy purifies wounds if the patient has reason to believe that some poison has entered. Now remember, this is very, very important. Being a cleanser, this remedy purifies wounds if the patient has the reason to believe that some poison has entered, which must be drawn out. Are you all getting it? ये फीलिंग होना चाहिए तो ये रेमेडी वर्क करेगा, नहीं तो रेमेडी नहीं वर्क करेगा. इलनेस कुछ भी हो, सोरियासिस हो या हेयर फॉल हो या कुछ भी हो, द फीलिंग शुड बी कहीं ना कहीं कुछ अंदर प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं कुछ डर्टी है. फीलिंग है कि मैं डर्टी हूं, मैं अब्यूज हूं, उसके वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर क्रैब एप्पल चलेगा, मैं तो क्रैब एप्पल. ओके, so that finishes with all of the three modules. I have tried to make it as simplified as possible. So we will just go through. I was talking about these keynotes, right? So just now, just before the session, I got this and I thought I will give this to you because this is very, very important. So if we look at, just go through fast through all the remedies. Agrimony, I told you, mental torture behind a cheerful face. Aspen, fear of unknown things. Beach, intolerance, perfectionist. Centauri, inability to say no. Sarato, lack of trust in one's own decision. That's why they'll go on asking people. Remember, ye karu, wo karu, ye karu, wo karu. Cherry plum, fear of mind giving away, fear of losing control. पागल हो जाऊंगा मैं. इतना गुस्सा आता है कि मुझे लगता है पागल हो जाऊंगा. एंड लॉस ऑफ कंट्रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चेस्टनट बर्ड, फेलियर टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक. चिकोरी, सेल्फिश पॉजिटिव लव नीड्स एप्रिसिएशन ऑफ अदर्स. क्लेमेटिस, daydreaming, dreaming of future without working in the present, absent minded. Crab apple, cleansing remedy also for self hatred, poor body image. Elm, overwhelmed by responsibility, pressures of work. भले मैं कर सकता हूं फिर भी मुझे लगता है कर सकूंगा कि नहीं. दैट इज हेल्प. Tension, discouragement और sadness after a small setback. Pessimism, पूरा डार्क में नहीं चला जाता है, थोड़ा सा इसमें, पर उसको कोई बोलेगा नहीं यार कर, मैं तेरे साथ हूं, तो वापस करने लगेगा. दैट इज जेंशन. सो जेंशन इज नंबर वन, रिमेंबर. उसके बाद आता है गोर्स, बिकॉज गोर्स हो जाए टोटली होपलेस हो जाता है. गोर्स कुछ ट्राई नहीं करेगा, जेंशन तो ट्राई करेगा. रिमेंबर, गोर्स इज टोटल होपलेसनेस एंड डिस्पेयर, टोटली डार्क. रिमेंबर दैट, नहीं कुछ भी नहीं हो सकता. हैदर, मैंने कहा बहुत बातू नहीं, दूसरों के बातों में बीच में बात करना, डिस्टर्ब करना, इंटरप्ट करना, खुद के बारे में ही बात करते रहना. सेल्फ सेंटर्डनेस, सेल्फ कंसर्न. होली, वी टॉक्ड ऑफ हेट्रेड, एनवी, जेलसी, फील्स विक्टिमाइज. हनीसकल, हमारे जमाने में ये होता था, हमारे जमाने में वो होता था. लिविंग इन पास्ट, ओवरवेलमिंग नॉस्टैल्जिया फ्रॉम द पास्ट. रिमेंबर, क्लेमेटिस इज ऑल अबाउट फ्यूचर, नॉट अबाउट पास्ट. हॉर्नबीम, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये मेरे से होगा ही नहीं, तुम्हारे से नहीं होगा ये बच्चे. प्रोक्रेस्टिनेशन, टायर्डनेस एट द थॉट ऑफ इवन डूइंग समथिंग. करने से पहले टायर्डनेस हॉर्नबीम, करने के बाद टायर्डनेस ऑलिव. रिमेंबर, इम्पेटियंस, एज द वर्ड सजेस्ट, इम्पेशंस के लिए एक जगह रुक नहीं सकते, बाकी सब धीरे चल रहे हैं, मैं अकेला बहुत फास्ट चल रहा हूँ. लार्ज, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटेंट बट फियरिंग फेलियर. मैं कर तो सकता हूं बट करूंगा, कर सकूंगा कि नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट. आर यू गेटिंग इट? मस्टर्ड, डीप ग्लूम, मुझे मालूम नहीं सैडनेस क्यों है, क्या है मुझे मालूम नहीं. ओक, कंटिन्यूस मैं काम करते रहूंगा, ये इलनेस का मैं कहीं ना कहीं इलाज तो फाइंड आउट करूंगा ही, कुछ ना कुछ करते रहूंगा, भले सब कुछ डाउन हो जाए, सब सर्कमस्टेंस डाउन है, फिर भी मैं काम करूँ. प्लॉडर, हु कीप्स गोइंग पास्ट टू द पॉइंट ऑफ एग्जॉशन. ऑलिव, एग्जॉशन फॉलोइंग मेंटल और फिजिकल एफर्ट. पाइन, बहुत सारा गिल्ट, सेल्फ ब्लेम, सेल्फ कंडेमनेशन. रेड चेस्टनट, मेरे बच्चे का क्या होगा, खाना खा रहा है कि नहीं, स्कूल जा रहा है कि नहीं, टॉयलेट जा रहा है कि नहीं, नहा रहा है कि नहीं. ओवर कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ लव्ड वंस. सिर्फ लव्ड वंस, रिमेंबर, पूरी दुनिया के लिए नहीं है, दुनिया के लिए बहुत सारी दूसरी रेमेडीज है, बट लव्ड वंस के लिए रेड चेस्टनट है. रॉक रोज, टेरर, फ्राइड, पैनिक, एकदम स्ट्रेमोनियम लाइक सिचुएशन. नाइटमेयर्स, मालूम नहीं कहां से क्या आ जाएगा, बहुत सारा डर. डर इन 3 मार्क्स, रिमेंबर, मिमुलस और एस्पेन का डर का अगर 1 और 2 मार्क में रहेगा, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, 10 मार्क्स में रहेगा. रॉक रोज का डर. रॉक वाटर, गांधी जी एंड ऑल दोज पीपल हु आर फाइटिंग फॉर अदर्स. सेल्फ डिनायल, खुद खाना नहीं खाएंगे, खुद उपोषण पे जाएंगे, खुद धरना धरेंगे. सो मेनी लीडर्स डूइंग इट फॉर पीपल पीपल पीपल, सिर्फ लोगों के लिए करना है. रिजिडिटी एंड सेल्फ प्रिपरेशन, सुबह उठ के योगा करना है, ये करना है, वो करना है, तबीयत ठीक नहीं फिर भी मैं सुबह उठूंगा, योगा करूंगा, ये वो. स्क्लेरेंथस, ये या वो, दो चॉइस है, ये करूं या वो करूं, but they will not ask people. Remember, Serato will keep asking people. Serato में भी lack of decision है, Scleranthus में भी lack of decision है, but you have to know, we have already done the difference, Scleranthus और Serato का, ठीक है.
Star of Bethlehem, I told you, shock, loss, bereavement, trauma, emptiness syndrome. Sweet sadness, extreme, last. कोई आगे कुछ hope ही नहीं है. When everything has been tried, there is no light remaining. वर्वेन ओवर एंथुजियाज्म, तुम करो, ये मैं तुम्हारे लिए बोलता हूँ, तुम्हारे लिए अच्छा है, करो करो करो, तुम ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो. अरे हमने आपको पूछा है क्या? नहीं नहीं, फिर भी आप करो 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 करो. वर्वेन ओवर एंथुजियाज्म. परफेक्शनिज्म. वाइन, तुमको ये करना ही पड़ेगा. डोमिनेशन, इनफ्लेक्सिबिलिटी. Walnut, protection from change, unwanted influences, birth, puberty, divorce, childbirth, menses, puberty, menopause, menarche, changes, transition, change of house, adjust नहीं कर पा रहा हूँ, नए घर में आ गए, adjust नहीं कर पा रहा हूँ. Think of walnut. Water violet, pride and aloofness. मैं अलग ही रहता हूँ, मैं किसी से बात नहीं करता, मुझे ज्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं, कम दोस्त है मेरे, दोस्तों में जाता हूँ तो मैं बात करता हूँ. बट जब बहुत सारे लोग होते तब मुझे बात करना नहीं अच्छा लगता, मुझे अपनी एनर्जी वेस्ट करनी अच्छी नहीं लगती. दे मे अपीयर अलूफ, दे मे अपीयर लाइक प्लैटिना, बट दे आर नॉट लाइक प्लैटिना, रिमेंबर. White chestnut, unwanted thoughts, mental arguments, unwanted thoughts, unable to concentrate, things coming up again and again, remember. Wild oat, uncertainty over one's direction of life. अभी मैं क्या करूं? अभी अभी मैं 50 इयर्स का हो गया हूं, अभी मुझे जॉब नहीं करना है, बिजनेस करूं, दुकान खोलूं, ये करूं, क्या करूं, मुझे समझ नहीं रहा, मुझे डायरेक्शन मालूम नहीं मेरे लाइफ की. वाइल्ड ओट, रिमेंबर. वाइल्ड रोज, कंप्लीट ड्रिफ्टिंग, रेजिग्नेशन, अपैथी, कुछ भी नहीं हो सकता दुनिया में. बिलो, सेल्फ पिटी, रिसेंटमेंट, बिटरनेस, ग्रम्बलिंग, कंप्लेनिंग ऑलवेज, बुरा सोचना, बुरा बोलना. Last is the rescue remedy, which I wanted to tell you that it is a composite remedy consisting of Star of Bethlehem, rock rose, cherry plum, clematis. Remember, this is very, very important. Emergencies to combat fear, panic, shock, and fear of losing control. ये सब रेमेडीज ऐड होके रेस्क्यू रेमेडी बनती है. ऑलवेज यू शुड हैव रेस्क्यू इन योर हैंड. रिमेंबर, एनी इमरजेंसी एट होम, गिव रेस्क्यू ड्रॉप्स एंड देन probably you can think of some other remedy. Always think, if you're able to get a clear picture, give the individual remedies or mix the remedies, but otherwise always keep rescue in your hand, rescue in your bag, rescue in your drawer, everywhere. कहीं पे भी रख दो. पानी के एक बॉटल में 100 ml या 1 लीटर बॉटल में 4-5 ड्रॉप्स डाल के उस पेशेंट को बोलो पूरा दिन भर आप उसी में से पानी पीते रहो, वो पीस, काम, कूलनेस आ जाएगा. कोई भी प्रॉब्लम हो, इवन इफ इट इज एट्रियल फिब्रिलेशन और एरिथमिया ऑल्सो, even if it is lot of palpitation, lot of headache, any emergency situation, आपके पास कोई दवाई नहीं है, give rescue. It will help you tide the crisis. I have seen it in my practice. You can also see it in your practice. Okay. So that finishes with all the 3 modules. Just one more last thing was last time also we talked about Dr. Batra's academy and the various courses, the postgraduate webinar-based courses that we do at our academy. So we have fellowship course in homeopathic dermatology, certificate course in cosmetology and aesthetics, certificate course in respiratory allergies, and the 4th course we are starting is course in oncology also. So probably by April, first week or second week, we'll be starting. The admissions have started. Lot of advantages you can do from wherever you are. आप दिल्ली में हो, नोएडा में हो, कहीं पे भी हो, वहीं से आप कर सकते हो. एग्जाम के लिए सिर्फ एक दिन बॉम्बे आना पड़ेगा आपको. The course is from the MUHS Maharashtra University, affiliated to the university. You will get a certificate from the university. So there is a 1 year course and there are 6 month certificate course also, which you can do from the leisure of your home. No need to leave job, no need to leave practice. You can, it's like a CME, continuous medical education. You get the latest trend in dermatology, the allopathic part, the homeopathic part, everything. So do join us. I'll be very, very happy to host you at the academy. And if you have any queries, my numbers are written down there. So you can always call me on 9892166616 or drsamirchokar@gmail.com. And in the end, I would like to thanks vaccines and special thanks to Sir Dr. SPS Bakshi sir and Tanya, Dr. Tanya, for giving me the opportunity to speak to all of you on such an important topic. The first session we did offline, the other 2 sessions we did online, and I'm looking forward to some more sessions with all of you regarding batch flowers or homeopathy or anything like that. If you need, you can always give a feedback regarding that. And Dr. Shikha, we can go to any questions if you have. Yes, sir, we do have some questions. These are the Dr. Bakshi's flowers. These are the
So You we can do connect have to some them. Yeah. questions, but before that, I will really like to inform all the participants that please do not worry about the PPTs and the recordings. You will be getting it online on your email, registered email IDs. And sir, let's start with the question answer round. We have some questions. The first question goes is, irritable due to care for others, which medicine should be prescribed? हम्म। जैसे मैंने कहा कि इरिटेबिलिटी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ अ बेसिक इमोशन केयर फॉर। तो केयर फॉर अदर्स है तो आप रेड चेस्टनट के बारे में सोचोगे रादर देन इरिटेबिलिटी। रिमेंबर ऑलवेज बेसिक इमोशन पे या बेसिक फीलिंग पे जाइए आप। स्टोरी में मत भरिए। स्टोरी में क्या है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे ये करने का मन हो रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, ये तोड़ फोड़ कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो, कहाँ से आया है, पहले से आप ऐसे हो? नहीं, पहले से ऐसे नहीं। जब से मेरा बच्चा चला गया है ना अमेरिका की यूनिवर्सिटी, तब से मुझे गुस्सा आ रहा है। क्या कर रहा होगा वो, कैसे खा रहा होगा, उसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है। थिंक ऑफ रेड चेस्ट। कोई भी इमोशन के पीछे जाइए एंड फाइंड आउट कीजिए एंड देन यू विल गेट द रेमेडी। Okay, thank you, sir. And next question is irritable due to overcare. I think we have covered it with the ओवर केयर कौन सा है, दैट इज इंपॉर्टेंट ना, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। Yeah. ओवर केयर किसके लिए, दुनिया के लिए आपको, आपके बच्चों के लिए, वो देखिए। आर यू गेटिंग इट? बच्चों के लिए तो रेड चेस्टनट है। ओवर केयर दुनिया के लिए है आपको, तो आपका वर्वेन भी हो सकता है, रॉक वाटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकती है रेमेडी। तो उसको डिसेक्ट करना बहुत जरूरी है। फाइनली डिसेक्ट करके रेमेडी दी, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। Right, sir. So next question is, what is the difference between Aspen and mustard? मस्टर्ड इज फॉर डिप्रेशन, सैडनेस। एस्पेन इज फॉर फियर। एस्पेन इज फॉर फियर ऑफ अननोन थिंग्स। मुझे मालूम नहीं है डर क्या है, मुझे लग रहा है इस रूम में कोई है पर दिखता नहीं है। रात को मैं जब ये सोता हूँ तो मुझे कदम कोई चल रहा है ऐसा लग रहा है, ये डर है अंदर। पर किस बात का डर है वो मुझे मालूम नहीं। अगर मुझे मालूम होता क्या डर है तो मैं मिम्यूलिस दूंगा। अगर मुझे मालूम नहीं है किस बात का डर है तो मैं एस्पेन दूंगा। अरे सर मैं सैड हूँ बहुत, कुछ मन ही नहीं हो रहा है, कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है, किसी से बात करने का नहीं मन। कारण क्या है? पर सर कुछ हुआ है आपको, कुछ फेल हुए हो आप, कुछ नौकरी चली गई, डिसअपॉइंटमेंट लोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है फिर भी मैं सैड हूँ। तो देन आई विल गिव मस्ट, दैट इज द। सो वो दोनों टोटली डिफरेंट इमोशंस है। एस्पेन और मस्टर्ड में तो हम कंफ्यूजन कर ही नहीं सकते कभी भी, नींद में भी। Sir, next question is, can we mix second and third group remedies? व्हाट इज सेकंड एंड थर्ड? Dr. Prachi, please be precise in your question. सेकंड एंड थर्ड ग्रुप क्या होता है? व्हाट इज सेकंड एंड थर्ड? Sir, moving on मिक्स to कुछ the भी, next. मिक्स कुछ भी कर सकते हैं, वैसे इमोशंस होने चाहिए। देखिए ग्रुप इज नॉट इम्पोर्टेंट, मैं वापस एक बार आपको बताता हूँ। ग्रुप्स में हमें मिक्सअप या कंफ्यूज नहीं होना है, रेमेडीज को जानो आप। ग्रुप्स को देख के अगर रेमेडीज को अंडरस्टैंड करोगे, अगर कर सकते हो तो अच्छी बात है। बट अगर आपको लगे अरे ये रेमेडी में तो ये ग्रुप में होनी चाहिए, इस ग्रुप पे कैसे आ गई, तो उसका उसके बाद से कंफ्यूजन शुरू हो जाता है कि अरे ये रेमेडी यहाँ पे क्यों है, वहां पे क्यों नहीं है। तो डॉक्टर बैच ने बहुत सोच समझ के ग्रुप्स बनाए थे, बट कभी कभी हम नहीं समझ पाते कि वो ग्रुप्स क्यों बनाए हैं। तो उसके लिए एक ऑल्टरनेट अंडरस्टैंडिंग है कि भाई पूरी रेमेडी ठीक तरह से जान लो, और वैसा फीलिंग आएगा तो वैसे दे दो, ग्रुप्स में जाइए मत आप, है ना? दैट इज इम्पोर्टेंट। So next question is, 80-year-old lady doesn't want to leave home. Sad. Which bachelor remedy should be given? आई विल ट्राई टू आस्क मोर क्वेश्चन नो शिखा, थोड़ा और सवाल पूछूंगा मैं। डजंट वांट टू लीव होम, सैड है तो सैडनेस क्यों है? घर से क्यों नहीं निकलना है आपको? घर से निकलने को नहीं, मुझे डर लग रहा है, अगर मैं क्रॉस करूंगी तो एक गाड़ी आके मुझे उड़ा डालेगी, तो मिम्यूनस हो सकता है ना? या बाहर नहीं जा रही हूँ कि अगर मैं लोगों से मिक्सअप नहीं होना चाहती तो मैं वाटर वायलेट दे दूंगा। बाहर जा रही हूँ, लोग मुझे पूछेंगे कहाँ क्यों, क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो भी मुझे इरिटेशन हो जाएगा, इम्पेटियंस लूंगी मैं, है ना? तो Right. बाहर नहीं जा रहे, सैडनेस और बाहर नहीं जा रही ये सिम्टम नहीं है। उसके पीछे क्या है, मेरे बच्चे बाहर चले गए हैं तो मैं दुखी हो गई हूँ, मुझे बाहर कहीं जाना नहीं है। मैं ऑलवेज सोचती रहती हूँ कि मेरे बच्चे वहां पे कुछ खाना खा रहे होंगे कि नहीं, तो मैं रेड चेस्टनट भी दूंगा, है ना? या फिर मैं पास में अटकी हुई हूँ कि हमारे जमाने में ये होता था वो होता था, तो हनी शक्ल ले लिया मैंने। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर, इट हैज टू बी अ प्रॉपर केस। ऐसे मत बताइए लेडी को दुख है तो क्या देना है, ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट आउट। So next question is, it is coming again and again. In the last session also we covered this one. Please explain about the doses and repetition.
Doses and repetition is when you mix the batch flower remedies according to emotions in a maybe 30 ml of water, or if they are alcohol based, you can give directly in the pills also. Four pills three times दे सकते हो, four drops three times दे सकते हो आप मिक्सचर को. और वो मिक्सचर तब तक देना है जब तक वो इमोशन रहे. वो इमोशन जाने के बाद वो रेमेडी विल बी लाइक अ प्लेसिबो. तो एक रेगुलर फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है. यू कैन नॉट टेल द पेशेंट कि ये फ्लावर रेमेडी लेके जाओ और एक महीना लेते रहो. ऐसा नहीं होता. यू विल हैव टू कंटिन्यूअसली टेक अ फॉलोअप. टेल वॉट एवर द मेजर इमोशन, टेल द पर्सन के प्लीज फोन मी बैक, टेल मी हाउ यू आर फीलिंग. हाँ, somebody is crying, weeping, or the son gone there, she's too much over caring, or she's very possessive. तो changes देखने हैं हमें. अगर changes नहीं हो रहे हैं तो flower remedies are like placebo. Are you getting? So give it for the right emotion. See to it that the emotion disappears. Once that negative emotion disappears, stop the remedy. Don't continue. Okay, that is very. Sir, next question is for narcissist personality, heather can be used? Yes, I can. The people who are just talking about it now, narcissistic personality is a very big, broad, kind of a thing. तो उसमें बहुत सारे रेमेडीज आ सकते हैं. वाइन भी आ सकता है, चिकोरी भी आ सकता है, उसमें हेदर भी आ सकता है, बहुत सारे आते हैं. We have to see what is that type. I mean, again, narcissistic personality के लिए there could be a combination of two, three things. Are you getting? Which is the predominant emotion? What is the predominant emotion? Whether it is too much dominating, whether he says my way or highway, that is the most important thing. Whether it is kind of, there could be some jealousy, mistrust, suspicion also involved, then holy can be there. So there could be many remedies involved. So there are no individual remedies for diagnosis, remember. It is for the person and the person's symptoms and emotions, not the story. Remember. So next question is which medicine should be given to the patient who has anxiety and sleeplessness after death of any known person, whether she is close to it, him or not? तो वो डेथ की वजह से क्या फीलिंग्स हुए आपको, इमोशंस क्या है आपके, आप who was that person to you, how what was your interpersonal relationship with that person. वो डेथ के टाइम पे आपके इमोशंस क्या थे. मुझे शॉक लगा था, उसके बाद से ये सब प्रॉब्लम शुरू हुआ है. तो यू कैन थिंक ऑफ स्टार ऑफ बेथलेम. वो जब से चले गए तब से मेरे ख्यालों में ही आ रहे हैं. मैं सोचती हूँ कि वो उनके बारे में ही सोचती रहती हूँ. ये ख्याल रुकते ही नहीं. आई कुड थिंक ऑफ व्हाइट चेस्टनट ऑल्सो कि मुझे स्लीप नहीं हो रही बिकॉज वही ख्याल आ रहे हैं मुझे. हम दोनों साथ में घूमते थे, आइसक्रीम खाते थे, पिक्चर देखने जाते थे. तो मैं हनी शकल भी दे सकता हूँ. तो बहुत सारी रेमेडीज आ सकती है. तो क्या एग्जैक्टली पेशेंट बात करता है उसके ऊपर है. तो एक क्वेश्चन पे हम लोग पूरा रेमेडी ला नहीं सकते. विल हैव टू गो मोर डीपर इनटू इट. Definitely. So next is anxiety for his health, mostly fear of heart disease. Complaints started after his report suggested high lipid, and since then he has constant thought regarding this. ठीक है. तो जब से रिपोर्ट मिला है तब से मुझे शॉक लग गया. इट इज अ काइंड ऑफ अ शॉक. सो आई कुड थिंक ऑफ स्टार ऑफ बेथलेम एज अ बेसिक रेमेडी. बट आई कुड ऑल्सो थिंक ऑफ व्हाइट चेस्टनट एंड मिमुलस ऑल्सो बिकॉज फियर भी है, थॉट्स भी है. स्टार ऑफ बेथलेम उनकी बेसिक रेमेडी हो सकती है. क्लेंजिंग रेमेडी की जैसे उसको स्टार ऑफ बेथलेम दे सकते हैं. क्रैब एप्पल भी दे सकते हैं अगर उनको लगता है नहीं लिपिड मेरे ब्लड में है, तो मेरा ब्लड खराब हो रहा है, मेरे ब्लड में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है. तो ये जब पेशेंट बात करता है पूरी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में और अंदर क्या क्या हो रहा है, कैसी गंदगी भर गई है मेरे आर्टरीज में, यू कैन थिंक ऑफ इवन क्रैब एप्पल. बट प्राइमरीली आई विल थिंक ऑफ, सिंस द रिपोर्ट पढ़ा मेरे को तब से शॉक लग गया है, तो आई विल थिंक ऑफ स्टार ऑफ बेथलेम. एंड देन यू कुड थिंक ऑफ व्हाइट चेस्टनट एंड मिमुलस फॉर फियर एंड थॉट्स. Okay. So next question is lot much frustration and irritable, even beat her little ones, also very much frustrated while talking to loved ones with loss of direction in life, can't be able to complete any single work which has been started, ये तो loss of आपने interest. आपने एक एक रेमेडी के सिम्टम्स निकाल के आपने बता दिया. ऐसे तो 38 रेमेडीज देने पड़ेंगे हमें. देखिए Okay. अगेन बेसिक कहाँ से आ रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट भाई. आप अलग 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 सिम्टम्स दे रहे हो, ठीक है, इसके लिए अलग अलग रेमेडीज भी दे सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं. अप टू 6 रेमेडीज तक हम लोग कॉम्बिनेशन दे सकते हैं. तो जो जो आपने इमोशंस बताए उसके लिए आई एम श्योर आपने सिंस इमोशंस बताया बराबर वर्ड लाइक और एकदम डायरेक्ट रेमेडी को कॉरेस्पॉन्डिंग बताया, तो आपको मालूम है कि रेमेडीज क्या है. तो वो आप रेमेडीज मिक्स करके भी दे सकते हो. बट ये शुरू कहाँ से हुआ है ये भी हमें देखना है. कुड यू जस्ट रीड इट अगेन प्लीज. ठीक है, क्या था, कैन यू रीड इट अगेन. Lot much frustration and irritable, even beat her little ones, also very much frustrated while talking to loved ones,
with loss of direction in life, can't be able to complete any single work which has been started, loss of interest in anything, but want to become financially independent, but not able to do so. सो आई थिंक बेसिक प्रॉब्लम तो लॉस ऑफ डायरेक्शन ही है। प्रॉब्लम इज मुझे ये सब कुछ स्टेम कहाँ से हो रहा है कि भाई मुझे समझ नहीं रहा है मेरे लाइफ में मैं क्या करूं। उसके बाद से मुझे गुस्सा आ रहा है, उसके बाद से ये सब हो रहा है। तो आई वुड थिंक ऑफ वाइल्ड ओट एज द बिगिनिंग रेमेडी एंड देन प्रोबेबली मिक्स सम अदर रेमेडीज एंड आल्सो बिकॉज बेसिक इमोशन तो वही है कि लैक ऑफ तो कहाँ से ये सब शुरू हो रहा है ये बहुत जानना जरूरी है। तो आस्किंग द पर्सन कि भाई आप पहले से ऐसे हो गए, नहीं पहले से मैं ऐसे नहीं था, पहले तो बच्चों के साथ अच्छा रहता था, वाइफ के साथ अच्छा रहता था, अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, कब से आ रहा है? जब से नौकरी छोड़ दी, अभी मुझे मालूम नहीं मैं क्या करूं, अभी टीचिंग में जाऊं कि प्रैक्टिस करूं कि बिजनेस खोलूं, मुझे समझ ही नहीं चला, उसके बाद मेरा इरिटेशन बढ़ गया है। तो यू कुड थिंक ऑफ वाइल्ड ओट, isn't it? Okay. So somebody has written, I have a patient who find fault in her, like I don't have a proper looks, I wear specs, I look ugly, I have acne and scars. Which remedy should be given? हाँ, कौन सी रेमेडी आप ही बताइए, कौन सी रेमेडी है जो फॉल्ट फाइंड करते हैं, क्रिटिकल होते हैं, इनटॉलरेंस होता है। मैंने आपको एक शब्द बताया था, इनटॉलरेंस। किसी की भी कमी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको लगता है सब कुछ जैसा मैं हूं वैसे सब परफेक्ट होने चाहिए। रेमेडी बीच है ना, वो बीच हो सकती है। देखिए एक्सप्रेशन में होली भी आ सकता है, बिकॉज में जेलेसी, मिस्ट्रस्ट, सस्पिशन, एंगर वो सब भी है, रिसेंटमेंट भी है, तो विलो भी आ सकता है। बट ऑलवेज थिंक ऑफ अ प्राइमरी रेमेडी एंड अ कॉम्बिनेशन। जो प्राइमरी रेमेडी दे सकते हैं आप, या उस प्राइमरी रेमेडी में तीन चार कॉम्बिनेशन भी डाल सको, बट प्राइमरी रेमेडी होनी बहुत जरूरी है, बिना उसके नहीं चलेगा। Sir, a 5-year-old always comes to my clinic and washes her hands minute after minute. Her parents tell she is always washing her hands at home as well. Plus, she is an adopted child, so they know much about दे डोंट नो मच her. अबाउट। In that case, can we give crab apple to her? Yes, why not? But then वो तो आपको भी मालूम नहीं है कि she's adopted, so you don't know. But probably there is some history, maybe in the pregnancy, maybe some emotional trauma during the pregnancy and all that. So we will not be able to go to the core since we don't know the source. But अगर आपको source पता चलता है, if you find out who the parent is, probably you can ask. बाकी इसके लिए तो अभी क्रैब एप्पल ले सकते हो, रिपीटेड एक्ट के लिए व्हाइट चेस्टनट भी दे सकते हो। व्हाइट चेस्टनट और क्रैब एप्पल ले सकते हो, एंड लुक एट द चाइल्ड, हाउ द चाइल्ड इज, यू कैन गिव। Why don't we give any single produce here? Okay, so the next question is, at which situation we will prescribe oak? ओक। Yes, sir. आप सावरकर पिक्चर देखिए, वीर सावरकर, आपको पता चल जाएगा व्हाट इज ओक। पूरे सब सरकमस्टेंसेस, सिचुएशंस खराब चल रही हैं, खाना नहीं मिल रहा है, जेल में कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हैं। तो रॉक वाटर और ओक क्या होता है वो आपको पता चल रहा है। परसिवरेंस क्या होता है अंडर बैड सर्कमस्टेंसेस, पूरी सब सिचुएशंस खराब चल रही है। हाई स्पिरिटेड रूब्रिक क्या होता है? तो ये गुड हायोसाइमस है, कार्सिनोसिन है, जो हाई स्पिरिटेड होते हैं, ऑरम मेटालिकम है। तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज दैट, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये मूवीज, सीरियल्स, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो बहुत कुछ मटीरिया मेडिका और बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, तो आप वो देखिए तो आपको पता चलेगा। So next question is, see, so we don't give one dose here as in homeopathy? No, not one dose. Usually thrice a day or four times a day. That's how the dosage is. That's how Dr. Edward Bach has talked about. So we follow whatever he says. One dose के लिए see the thing is, though Dr. Edward Bach was homeopathy and lot of Bach flower is based on homeopathic principles as far as holistic medicine is concerned. But as far as dosage is concerned, around 4 drops 3 times a day or something like. I personally feel even a 4 drops का एक dose होगा, it will work, I think. But the thing is, we have to follow the scripture and the literature. That's how it is. And I've been doing it in my practice for a long time now. So 4 drops 3 times a day would suffice, I think. Or 4 pills 3 times a day. So the next question is, can we give bachelor remedies in autoimmune disorders? I mean, it can be given in anything as long as you are able to uh, find out the emotions, the expression, everything. Disease is ultimately the end product of what the problem is, right? So you have to go back to the disease, go behind the disease.
ऑटो इम्यून है, डायबिटीज है, सोरियासिस है, विटिलिगो है, एलर्जिक राइनाइटिस या एटोपिक डर्मेटाइटिस या वॉट एवर द प्रॉब्लम इज नॉट इम्पोर्टेंट, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, द प्रॉब्लम इज नॉट इम्पोर्टेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कहाँ से शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ, आपका एट प्रेजेंट इमोशनल लेवल क्या है, आपकी कंसर्न क्या है, आप इस डिजीज में कैसे अपने आप को मेंटेन कर पा रहे हो, बाकी अपना रोज का काम कैसे कर रहे हो। ये मेरा केस पेपर है, ये मेरे केस पेपर में बातें मैं पूछता हूँ एंड उससे मुझे रेमेडी मिलती है। होम्योपैथी हो या फ्लावर रेमेडी हो, केस पेपर रिमेन्स द सेम, बिकॉज अल्टीमेटली होम्योपैथी हो या बैच फ्लावर हो, यू हैव टू गो बिहाइंड। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है कि HIV एड्स है कि कैंसर है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज कैंसर डायग्नोज कैसे हुआ, कैंसर होने से पहले क्या प्रॉब्लम्स थे, अभी आप कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो या फेस कर रहे हो, व्हाट इज योर मेन कंसर्न नाउ, इज योर जॉब कंसर्न, इज योर चिल्ड्रन कंसर्न, इज योर वाइफ कंसर्न, क्या आपका मेन कंसर्न है, ये जरूरी है, ये जान के आपको रेमेडी मिलेगी। जरूरी नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि विल बी एबल टू क्योर इट, रिमेंबर आई एम नॉट सेइंग क्यूरेटिव, आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट एस्पेक्ट, वी आर ट्रीटिंग। क्योर तो होगा नहीं होगा इज अ सेकेंडरी प्रॉब्लम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वी हैव टू improve the quality of life, because now we are going away from the dictum or from the word cure or whatever, the most important thing is उसकी quality of life हमें improve करनी है। जो quality of life लेकर आ रहा है उससे ज्यादा improve हो गई तो I feel the mission is accomplished. Right. So next question is rescue remedy given in one dose? No, no, I would again rescue, I would give it in drops. I would maybe put it in a 100 ml bottle, or yeah, emergency के लिए rescue remedy you can put directly in drops on the tongue. But then you have to repeat it till the person is in that state. Again important, जब तक state रहेगी तब तक remedy रहेगी। State जाने के बाद अगर मुझे fear है, panic है, sudden heart में pain हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे heart attack आ रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है, तो जब तक ठीक नहीं होता तब तक I will give the remedy 3 or 4 times a day। एक बार वो प्रॉब्लम चला गया तो रेमेडी स्टॉप कर दे। So what is the remedy for fastidious, wants everything in place, gets irritable when things are not in place? Seems like arsenic to me, but what is the flower remedy? वी कंपेयर बीच विद आर्सेनिक, राइट? मुझे सब कुछ ठीक चाहिए, इनटॉलरेंट होता हूँ, मुझे गुस्सा आता है जब यहाँ की चीज वहां पे होती है, तो बीच भी दे सकते हैं, वाइन भी दे। उस आदमी के एक्सप्रेशंस भी क्या है, इमोशंस भी क्या है, और इमोशंस के पीछे क्या है, ये तीनों जानेंगे तभी हमें मिलेगा। बीनीथ द एक्सप्रेशन और बिहाइंड द एक्सप्रेशन इज इम्पोर्टेंट। फेस्टिडियस इज अ एक्सप्रेशन, रिमेंबर। फेस्टिडियस के लिए कोई रेमेडी नहीं, बट फेस्टिडियस क्यों हो, मुझे लगता है मेरी चीजें यहाँ वहां होता है तो मुझे बहुत गंदगी लगती है, मुझे गंदगी अच्छी नहीं लगती, ऑब्सेसिव हो तो क्रैब एप्पल भी हो सकता है। मुझे गुस्सा आता है और मैं लोगों को डांटता हूँ, फटकारता हूँ, तो मैं बीच और वाइन भी हो सकता हूँ। बहुत सारी रेमेडी, तो फेस्टिडियस के लिए कोई रेमेडी नहीं होती। Okay. Sir, somebody has asked, sir, have you seen any medicinal aggravation in flower remedies? Last time also we had talked that until unless you're very, very, very hypersensitive, I have never seen a reaction. But I have seen in few people who are very, very sensitive. They were very sensitive to homeopathy also, the dynamic dose of homeopathy also, and they are kind of sensitive. But it's not an aggravation. It's just that sometimes I see some symptoms increasing here and there. But I would say 99% no aggravation. So remedy for addiction. देखो एडिक्शन में हमने पहली रेमेडी जो बात की थी वो तो ऑफकोर्स एग्रीमनी थी, बट सब एडिक्ट्स तो ऐसे होते नहीं कि बाहर से दिखाते हैं अच्छा अंदर बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। सबको ऐसे होता है, बट बाहर कोई इरिटेबिलिटी भी दिखाता है, जरूरी नहीं हर बार कोई हंसता रहता है। सो वी हैव सीन, इवन आई हैव डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन एडिक्शंस इन कनाडा एंड आई वाज वर्किंग विद एडिक्शन सेंटर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड वी आर गिविंग होम्योपैथी एंड फ्लावर रेमेडीज। बट देन एग्रीमनी, जो हर बार बैच फ्लावर्स में बोला जाता है कि एग्रीमनी इज अ गुड रेमेडी फॉर एडिक्शन, जरूरी नहीं है कि एग्रीमनी होगा। हाँ, बचपन से अगर आपकी उसकी हिस्ट्री ले लो, बोले बचपन से मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ अपने इमोशन, मेरे डैडी मम्मी बहुत अब्यूजिव थे, मुझे बहुत मारते थे पीटते थे, घर पे डैड भी शराब पीते थे, मुझे शराब लाने के लिए बताते थे, आई वॉज टोल्ड टू ब्रिंग अल्कोहल, ही यूज्ड टू हिट माय मदर, देयर वर लॉट ऑफ वर्बल एंड फिजिकल अब्यूज एट माय होम। ये सब है उसका बैकग्राउंड, और वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाया कभी भी, उसके बाद उसने शुरू कर दिया अल्कोहल, तो फिर मैं एग्री नहीं दे सकता हूँ बिकॉज ऑफ नॉन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। बट एट द सेम टाइम मुझे गुस्सा भी बहुत आता है, मैं इंटॉलरेंट भी बहुत हूँ, तो वाइन, चिकोरी, वर्बेन, बहुत सारी रेमेडीज आ सकती है, बीच आ सकती है।
बेसिकली एडिक्शन में क्या होता है, नंबर वन, एक तो वापस वापस हम लेते हैं, तो द रेमेडी इज वाइट चेस्टनट फॉर श्योर, ठीक है। सेकेंड थिंग इज समटाइम्स मेरे में खुद में कुछ खराबी है, इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरे अंदर कुछ खराबी है, तो क्रैब एप्पल भी ले सकता हूँ। So there could be a crab apple. So few remedies that I feel for addiction are primarily agrimony. I could think of crab apple. I could think of white chestnut. I could think of walnut because वो जिस टाइम छोड़ते हैं तभी बहुत सारे withdrawal effect आते हैं, तो वो transition is not possible. Alcoholic to non-alcoholic transition बहुत severe होता है because people can even die if you stop their alcohol suddenly. That's why it's very difficult withdrawal of alcohol. Remember. So इसके लिए to give walnut during that phase is very important for transition. So the next question is, a patient feeling bad because of others' behavior. Husband is very rude and she developed rheumatoid arthritis. The patient feeling bad means what? What is bad? ऐसी तो कोई दवाई है नहीं फ्लावर रेमेडीज में फीलिंग बैड, है ना। तो बिहेवियर, दूसरे के बिहेवियर माने हस्बैंड के बिहेवियर रूड है, अभी वो कैसी है, इफ शी इज वेरी माइल्ड लाइक सेंटोरी, छुई मुई जैसी, पल्सेटिला जैसी है, कि मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं ऐसा करते वैसे करते, रोती रहती है, तो आई कुड थिंक ऑफ अ सेंटोरी मेंबर, ठीक है। अगर वो बोलते हैं तो मैं सोचती रहती हूँ, पूरा दिन भर सोचती रहती हूँ, तो व्हाइट चेस्टनट भी ले सकता हूँ, है ना। एग्री मनी हूँ, मैं अपनी बातें बोल नहीं पाती, अंदर मन ही मन घुटती रहती हूँ, तो एग्री मनी भी दे सकता हूँ, है ना। तो ये सब जानना बहुत जरूरी है, एक्सप्रेशंस भी क्या है आपके और बेसिक इमोशंस क्या है। बेसिकली आई वुड थिंक ऑफ सेंटोरी फॉर हर इफ शी इज वेरी माइल्ड, वगैरह वगैरह, ए बी सी डी। आप थोड़ा दुख की रेमेडीज भी देख सकते हो, जैसे जेंशन है, गोर्स है, मस्टर्ड है। मस्टर्ड तो बिना कॉज के है, बट जेंशन और गोर्स के बारे में कभी कभी देख सकते हैं। सैडनेस हो सकता है कि हस्बैंड रूड है। हस्बैंड रूड है माने मेरा खुद का जो पर्सन है वो मेरे से ठीक तरह से बात नहीं कर रहा है, तो सेंटोरी, क्लेमेटिस, वो वाले रेमेडीज भी आ सकते हैं। बहुत सारे रेमेडीज आ सकते The patient feeling that he can't do anything in life, as whatever he started to do, he left it in between. हैं। व्हाई डिड ही लीव इन बिटवीन? बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट वाज राइट व्हाट वाज रॉन्ग, है ना। या फिर वो सीख नहीं रहा है अपने प्रीवियस मिस्टेक से। जैसे मैं एक कोर्स कर रहा हूँ अभी, इफ आई एम डूइंग सम कोर्स इन मे बी एलर्जीज और मे बी सम गायनेकोलॉजी, एंड पहले बार मैंने किया तो मुझे लगा ये मेरा फील्ड नहीं है यार, गायनेकोलॉजी करके कुछ मतलब नहीं है, मेरे पेशेंट भी नहीं आ रहे हैं। और दूसरी बार मुझे कोई बुला रही है गायनेकोलॉजी का कोर्स कर, वापस मैंने गायनेकोलॉजी का कोर्स कर दिया। और वापस मैंने सोचा, अरे मैंने क्यों किया है, मैंने पहले बार तो किया था, अच्छा नहीं लगा था, वापस क्यों किया मैं। तो वो रिपीटेड मिस्टेक्स में कर रहा हूँ, सीख नहीं पा रहा हूँ। तो आई कुड थिंक ऑफ अ चेस्ट मेंबर। Wasn't that the question, Shikha? Yes, sir. There is another question. In case of a wine father scolds and controlling others, whole family suffers, including children. The wife came for treatment without the knowledge of that wine person. How to proceed treatment in this case, sir? Wife fears about child's future. Son is becoming low confident because of father's word that he is not worth. हाँ, तो किसको ट्रीटमेंट देना है? फादर को देना है, वाइफ को देना है, या सन को देना है? फादर को तो हम ऐसे दे नहीं सकते, इवन इफ शी सेज कि नहीं आप कुछ दवाई दो, मैं पानी में डाल के दूंगी वगैरह। करते हैं लोग बहुत सारे, बट आई डोंट एग्री टू दैट until unless he feels that he requires treatment. पानी में वगैरह डाल के देना इज नॉट अ राइट थिंग। आई डोंट थिंक इट इज लीगल ऑल्सो। सो आई वुडेंट थिंक ऑफ द वाइन फादर। बट देखिए ये परसेप्शन है, रिमेम्बर मेनी टाइम्स जो डिल्यूजन हम बोलते हैं, तो द फादर मे बी अ वाइन स्कोल्डिंग होगा, कंट्रोलिंग होगा, बट एट द सेम टाइम इफ यू ट्रीट द वाइफ ऑल्सो एंड द सन ऑल्सो for whatever the problem is, probably they'll start looking at a positive side and they themselves will develop an immunity towards that wine father. Remember, हमारा एम ये नहीं है कि उनके फादर चेंज हो, हमारा एम ये है कि वाइफ और ये मदर और वो चाइल्ड को इम्यूनिटी कॉन्फर करे। बाय इम्यूनिटी आई एम नॉट टॉकिंग इन स्ट्रिक्ट सेंस मेडिकल टर्म्स, इम्यूनिटी एंटीजन एंटीबॉडी वगैरह वो सब नहीं बोल रहा हूँ। इम्यूनिटी का मतलब है कि वो फादर ऐसे स्कोल्डिंग है, कंट्रोलिंग है, पर अपने पे उसके बैड इफेक्ट ना होने पाए, इसके लिए हम मदर को और चाइल्ड को ट्रीट कर सकते हैं। मदर को हम रेड चेस्टनट दे सकते हैं, मदर को हम मिम्यूलिस दे सकते हैं, चाइल्ड को लार्ज दे सकते हैं कॉन्फिडेंस के लिए वगैरह। एंड उनको खुद से हम स्ट्रांग बना सकते हैं, ताकि फादर के शाउटिंग से उनको इतना फर्क ना पड़े। भाई फर्क ना पड़े, आई मीन उनकी हेल्थ खराब ना हो ऐसे। Sir, is it like possible? This is my question. Is it possible that एक continuously एक
स्टिमुलस मिले जा रहा है, एक मेंटेनिंग कॉज है और हम मेडिसिन दे रहे हैं तो उससे इम्यूनिटी आ जाए? आ जाएगी, ऑफ कोर्स क्यों नहीं आएगी, बिकॉज कंटिन्यूस कॉज तो रहेगा, आपको कॉज को तो बदलना है नहीं। बहुत सारे टाइम आप भी देखो, होम्योपैथी देने के बाद एक नई नवेली दुल्हन होगी जो नए घर में गई है, बोलती नहीं मेरी ननंद है, वो मुझे बोलती रहती है, मेरी सास है और ननंद मेरे बारे में बात करती रहती है, मुझे बहुत अकेला लगता है। उसको आप एक होम्योपैथिक रेमेडी दो, अगर पल्सेटिला वो इंडिकेटेड रेमेडी है, तो नेक्स्ट टाइम आपका फॉलोअप 100% होगा कि यार डॉक्टर साहब आपने क्या दिया है मालूम नहीं, मुझे तो ठीक लग रहा है, पर आजकल मेरी सास भी मेरे से अच्छी तरह बात कर रही है, मेरी ननन भी अच्छी तरह बात कर रही है मेरे से। तो आपने सास और ननन को तो दवाई दी नहीं थी। इट इज द परसेप्शन ऑफ द पर्सन दैट यू चेंज। तो यहाँ पे अपने को मदर और बच्चे का भी परसेप्शन चेंज करना है। मेंटेनिंग कॉज तो रहेगा, उसको चेंज करने का हमें कुछ ये नहीं है। हाँ, वो अगर खुद आता है ट्रीटमेंट के लिए तो हम उसको ट्रीटमेंट देंगे, बाकी जो ट्रीटमेंट के लिए हमें आया है उसको हमें इम्यूनिटी कॉन्फर करनी है, दैट इज इम्पोर्टेंट। इम्यूनिटी इज टुवर्ड्स द बैड बिहेवियर ऑफ द फादर, जो हमें लगेगा एट सम टाइम, हमें लगेगा कि हाँ ठीक है यार भाई, उसका नेचर ही ऐसा है, क्या करे, मेरे फादर है ही गुस्से वाले, तो मैं क्या करूँ अभी? कुछ कर नहीं सकते उसके। ये होना चाहिए कि मैं उसको चेंज नहीं कर पाता, तो जो भी चेंजेस है मुझे मेरे में लाना, So in बिकॉज मैं this उसको case, बदलने जाऊंगा तो मुझे दुख होगा, मैं उसको बदलने जाऊंगा तो मुझे तकलीफ होगी। वो जो बोल रहे हैं उससे वो मैं अगर सुनूंगा और अंदर एब्जॉर्ब करूंगा तो मुझे और तकलीफ होगी। तो मुझे इम्यूनिटी करनी है, मुझे अपने आप को एक बॉल बनानी है जिसकी वजह से बुरी चीजें अंदर ना पहुंचे, दैट इज इम्पोर्टेंट। वो काम हमारा रेमेडी करे। thank you, sir. Patient not able to do anything, her routine work, profession, work, etc., as her health is not capable. She wants to do, but due to health, she can't be able to do things. Hopelessness comes, sometimes frustration and anger very much towards her loved ones. तो अगेन, होपलेसनेस फ्रस्ट्रेशन जो है वो एक्सप्रेशन है। प्रॉब्लम मेन क्या है कि मैं काम करना चाहती हूँ बहुत, पर तबीयत की वजह से नहीं कर सकती। तो यू गुड थिंक ऑफ ओक ऑल्सो, रिमेम्बर, जो काम करना चाहते हैं बहुत, फिर भी तबीयत की वजह से काम नहीं कर पाते, उनको और बहुत कुछ काम करना है, बट अपनी तबीयत की वजह से या अपने सर्कमस्टेंसेस की वजह से काम नहीं कर सकते, उनको ओक दे सकते हैं। देखिए, दीज आर नॉट 100% गारंटीड, मैं जो बोल रहा हूँ वो रेमेडीज, रिमेम्बर। हाँ, आई एम नॉट गिविंग यू द रेमेडीज कि भाई अभी जाके आप ओक दे दीजिए, ऐसा नहीं है। द थिंग इज अगेन, आप देखिए कि ओक कैसे काम कर सकता है कि नहीं, इसमें ओक के कुछ सिम्टम्स है कि नहीं, उनमें उनका बेसिक टेंडेंसी वैसा है कि नहीं, एंड देन यू प्लीज ट्राई, डोंट ट्राई जस्ट बिकॉज आई एम सेइंग इट। आई एम नो अथॉरिटी इन फ्लावर रेमेडीज। देयर आर मेनी पीपल हु आज हमारे यहाँ पे जो अटेंड कर रहे हैं वो लोग भी मेरे से ज्यादा प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं फ्लावर रेमेडीज, सो आई एम नो अथॉरिटी, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस। तो आप खुद एक्सपीरियंस कीजिए और देखिए। So your sessions have been effective, and that has been shown in the chat box. Dr. Khushmeet writes, after attending your first session, I had given inpatient batch flower remedy to ADHD child. After 2 weeks, parents are saying the child has started understanding parents' feeling. He feels that the parents felt tired running behind him. Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, वेरी मच। आई एम वेरी हैप्पी दैट, एंड आई वुड रियली लाइक ऑल ऑफ यू टू गिव मी फीडबैक्स। आज जो भी हाउ मेनी पीपल आर देयर टोटली, आर देयर 150, मोर देन 150 I suppose, right? So we have more than 150, right? Okay. So all of you, is a request from me that give us the feedback so that we can improve ourselves. I will also learn what I need to learn more. I need to, how I can come closer to all of you, how I can share whatever little knowledge I have, I would like to share it with you, my experiences. So let's all be in a family, Bike Sense is a family. So let us all be in this family and let us all work together to bring this system up, this very, very nice system. जैसे होम्योपैथी है वैसे ही फ्लावर रेमेडी है, दोनों भाई बहन है या भाई भाई हैं, तो हमें उनको दोनों को डेवलप करना है ना, किसी को एक को फोर्स सेकंड नहीं करना है। Definitely, sir. So next question is children's fighting with parents. I guess इसमें फिर से हमें इमोशन देखना होगा पहले. हाँ देखिए, शिखा मैडम सीख गई पूरा बैचलर इमोशन, चिल्ड्रन फाइटिंग विद पेरेंट्स, तो क्या, क्यों फाइटिंग कर रहे हैं वो भी देखना है ना। पेरेंट्स ही बताएंगे आपको क्यों चिल्ड्रन, अभी चिल्ड्रन एब्यूजिव है, हमारे होम्योपैथी में देयर इज अ रूब्रिक एब्यूजिव, चिल्ड्रन एब्यूजिंग द पेरेंट, राइट? सो क्यों एब्यूज कर रहे हैं, वेयर इज दैट एब्यूज कमिंग फ्रॉम? Is the father very tough? Is the mother very tough? Or are they very mild? What are the children learning in school? Who are the friends of these children? कहाँ से? So interpersonal relationships क्या है? कहाँ से ये सब आ रहा है? ये जरूरी है। Basically, आप you can, there could be many remedies for this. So
This question should be more specific and more detailed, rather than. Definitely, sir. So next question is, any specific remedy for repetitive behavior actions, what we call as tics, as in shrugging right shoulder. So tics is something which is uncontrolled, right? And you all know now which is the best remedy for lack of control, fear of lack of control. जो चीजें बिना कंट्रोल के होती है जिनको अपने पे कंट्रोल नहीं कर सकते, चेरी प्लम इज द बेस्ट रेमेडी. बट एट द सेम टाइम रिपीटेटिव एक्शन है तो व्हाइट चेस्टनट भी दे सकते. So you can give a combination of white chestnut and cherry plum, and also look at other emotions and give up to, as I've told you, up to 5 to 6 remedies can be mixed up and can be given. So you can, so cherry plum. I think Anita has written very good. Anita, some Anita, Dr. Anita has written cherry plum. So thank you very much. Okay, you're right. So next question is, patient get excited or attracted easily from any least thing and wanted to be like them or learn thing and starts doing things in excitement, but can't continue after 2 or 3 days due to lack of consistency. तो आप देखिए, एक तो पहले हम कॉपी किसको करते हैं, जब भी अपने को लगता है अपने में कुछ कमी है तभी, है ना. तो ये हमें देखना पड़ेगा कि आप क्यों किसी को कॉपी कर रहे हो, क्यों किसी के जैसा बनना चाहते हो. क्योंकि इज इट बिकॉज यू डोंट फील यू आर गुड इनफ, एंड इफ शी फील्स दैट आई एम नॉट गुड इनफ, यू वुड थिंक ऑफ क्रैब एप्पल, है ना. और वापस वापस वही कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू एप समबडी, दे आर नॉट लर्निंग फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, राइट, बिकॉज दे आर डूइंग इट अगेन एंड अगेन. सो इवन चेस्टनट बर्ड कैन बी देयर. So you'll have to, kind of dissect the symptoms like this and then think of the remedy. The next question is, my Dr. Rubina, patient weeps and worried during any type of illness, saying, I am the only person taking responsibility, but if something happens to me, what will happen to my family? What will happen to my family? So the remedy is clear, right? What will happen to my family? Rubina, just ask her if she's clear. If she can write the remedy in the chat. Dr. Rubina, are you there? Sir, moving on to the next. Somebody asked about Parkinsonism. तो Parkinsonism में भी वही है, uncontrolled things है. Parkinsonism में शुरू करने में तकलीफ है, एक बार शुरू होते हैं तो रुकने में तकलीफ हो जाती है. तो देयर इज अ हाइपरकाइनेसिया, प्रॉब्लम विद द मोमेंट्स, प्रॉब्लम विद कंट्रोल. तो चेरी प्लम भी ले सकते हैं. रिपीटेड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो व्हाइट चेस्टनट भी दे सकते हैं, है ना. So Rubina said yes ma'am, but she did not say the remedy. But So Dr. Greta said red chestnut. So that is right. So now Rubina is clear. So next is our feedback. Mimulus gives very good result in one of my patient during her exam. Yes, very fear of exams. So ये known fear है ना. has written this. Known fear है ना कि भाई एग्जाम्स को मुझे डर लगता है. So you can think of it. Very good. The last question as of now is, abusive person always scolding to inferior ones, and if someone is over his status, might resent, but always abusive, road rage, angry at home, etc. Very secretive, not talking at home for his problems. Looks more like wine with the domination and thinking that is right, road rage वगैरह वगैरह. I would think of wine or even beach, because road rage में बहुत intolerance भी रहता है कि भाई इतना slow क्यों चला रहे हो, इतना fast क्यों चला रहे हो. तो impatience और beach भी एक तरफ आ सकते हैं, दूसरी तरफ wine भी आ सकते हैं. Remember rock rose जो fear के लिए remedy है. One more application is in too much anger also. बहुत जो anger होता है और control नहीं होता, it's like a terror. Remember, you can correlate that terror to that anger and that kind of feeling. You can think of rock rose also for uncontrolled angers. Even cherry plum, right, for uncontrolled. So think of all these remedies in those aspects. Sir, next question जो बहुत सारे लोगों ने पूछा है, where we can get the Bach flower book? Where is the literature that we can refer? The best source is Amazon. You can go on Amazon and you can see there's a book called Sheffield, Matchfield Sheffield, which is a very, very good book. Go on Amazon. There are very nice books. One very clinical book is Dr. Bora. It's a very clinical small booklets. I think they are also good. So I think Dr. Bora is from Delhi only.
So those are good books, but Dr. Bora is more like a guide. So don't immediately jump to a guide. Look at the basic books. So basic books would be Mitchell's Sheffield, I think. I will. I'll just tell you the name. Just hold on. और कुछ है आपकी queries? So the questions are not left anymore. Okay. See, there is an Encyclopedia of Bach Flower Therapy, which is by Mechthild Schaeffer. Okay. So it's available. You can just go on Amazon and Amazon पे आप Bach Flower books देख सकते हो. Then of course there is one very nice book by our Indian called Dr. Krishnamurthy also. Dr. B. Krishnamurthy is from South and he's written a good book on bachelors. It's nice because I feel that there are a lot of Indian things in that and Indian. So at many places, you know, this person has said जो addiction वाले individuals होते हैं, उनको जब agrimony देते हैं तो उनकी वो addiction छूट के दूसरे कुछ art में चले जाते हैं. So that was something which I liked. You know, they start playing some instrument. You know, they start getting interested in music because they are basically very sensitive people. So after agrimony, they might go into some another addiction of music. Maybe they would start loving music or something like that, which I liked very much. I read it long time back. So there is a book by Dr. Bora, there is a book by Krishnamurthy, but of course the main book I would refer is as Schaeffer. It is around 937 rupees. So it's a good book. It is available on the same day. You can read that book. That is a very good book. Dr. Farooq Master has also written a book on flower remedies. So these are some books that are okay. I mean, plus the thing is, आप अगर internet पे भी जाओगे तो Bach Center UK, Bach Flowers, you get immense literature of Bach Flowers everywhere. So don't worry about it. You can get a lot of literature, but try to understand exactly what the therapy is all about, because there'll be a lot of literature available, but वो literature को कैसे use करना है वो बहुत जरूरी है. We should not fall into wrong things and give you know mediocre Bach Flowers practitioner नहीं बनना है. अच्छे practitioners बनना है. लोगों को heal करना है. ताकि the system will grow. You know, but that's very important. Thank you, sir. And the last question now, we have one more question. Old age patient can't move freely around out of weakness and always keeps feeling low, thinking I am burden to the family. Can you repeat the question? Yeah. Old age patient can't move freely around out of weakness and always keeps feeling low, thinking I am burden to the family. Always feeling low, so you can think of remedies of despair and despondency. Especially you could think of gourds, you could think of remedies where you feel useless. Again, the feeling is that I am not feeling good enough. Crab apple could be there. Remember, sadness could be there. So what are the feelings behind that? You know, those are important. Feeling of sadness is there. Feeling of redundancy is there. कि अभी मेरा कोई किसी को मेरा कोई यूज ही नहीं है, मुझे अकेले रख दिया है, मुझे कोने में रख दिया है. फीलिंग इज दैट 4 सेकंड फीलिंग है. क्या फीलिंग हो रहा है आपको, क्या लग रहा है आपको, ये बहुत जरूरी है. The next is it necessary to maintain 30-minute gap between meals and taking Bach flower medicine like other homeopathic medicines? No, I don't think so. I mean, 5-10 minutes is okay, no problem. ज़्यादा नहीं. The important thing is everything is through the tongue, so your mouth should be clean. That is the most important thing. So, I mean, if you have something strong smelling in your mouth like mint or anything, I would still not give anything. If your mouth is clean, you can give it. Thank you, sir. That ends our questions. Yeah. I'm Yes, sir. I just writing extend my email and my phone number also in case people want to talk to me or contact me. I'll be happy to help you. Okay. Okay. So anybody needs to have anything to with me, you can always mail me or message me on my WhatsApp. I'll be very happy to solve you. You can even send your small cases here and there. बट जैसे मैंने कहा कि केस को डिटेल में आप लीजिए, आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है वो बताइए, एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट. ओके. I mean, don't just send questions. What is the remedy for Parkinsonism? What is the remedy for migraine? Because I don't know how to give according to that. Okay? I know only
according to how the emotions are. Batch flowers are Don't given come with the according to emotion. diagnosis of the disease, Yeah, come yeah, with no, the emotion of the yeah, disease of the person. come with the diagnosis of the person, isn't it? So like this, so uh, delve into the emotion, understand the person completely, and then you. And I'm sure everybody will succeed because Dr. Bach has given a very, very simple system. अगर आप अच्छी तरह practice करोगे, so we can give relief to lot of people around who are seeking for treatment and healing. They are so much in pain. Everybody around us is so much in pain, so much in worry, so much in tension. Mothers are waiting for their children. Children are worrying about their parents. The parents are worrying about their own parents. Illnesses are so many. So we can always help a lot of people. Okay, so thank you very much. Thanks again to Dr. Bakshi sir and Dr. Tanya, and of course Shika for excellent comparing and helping me to speak Thank you whatever so I'm much, doing now sir. Thank and you being so a much. good supporter and encouragement. So I'm thank you. I hope Tanya is there and sir is also there. So thank you, sir, again for your encouragement and constant motivation. So, and I would love to be a part again of such sessions, talk to all of you and share whatever little I know in homeopathy and that's Thank you so much for your phenomenal session, sir. We are really delighted to know about the batch flower, to know about the flower remedies. Sir, I also want to announce that all the dedicated participants will be getting the certificates within a week. We will be starting to dispatch tomorrow, from tomorrow onwards. And we are delighted and thankful to all the participants who have made this three-part session of the certified course of the batch flower, Dr. Bakshi's flower remedies of HIT. And I request you all to fill up a feedback form, which will be shared on your registered email Yes, ID that's along with the exactly what PPT and I recordings. was going to tell you now that we will give them a feedback form about what was good, what was bad, what they would like change, any further sessions they would like from me. So some feedback where, and please share it with me also, if so my learning too. So it will be nice. Definitely, sir. We'll be sharing that. And also, there are so many people requesting for more. You could not hear. You are muted. Yeah. So there are so many people who are requesting for further sessions. So we will, you can also suggest for the topics for such sessions, whatever you want to, learn from sir. I mean, I was thinking that we could always talk about batch flowers in children, batch flowers in women, Yes, batch flowers in corporates or something like that. Because these are the kind of patients who come to us. Children, they come, so we could take batch flower children as 3 modules where we could talk about different problems of children, mental, physical, emotional problems, and think of different remedies like impatient children, ADHD children, social disorder, social, kind of. All the problems of children, psychiatric and psychological problems of children. We could do that. Women and children, we could do sessions together. We could do a lot of sessions for black. so another very good suggestion is that we can actually learn from your cases. Yeah. The cases that you have actually cured. We Yes, can learn from them also. absolutely. We can arrange a session with I the treat a cases. lot of autistic children with our remedies. So if we probably do some session autism at some level, we could also talk about autism and bachelor. So you shared your videos in the first session as well. Yeah, I do. Yeah. Thank you so much, sir. Bye bye. Thank you Thank all you. of you for joining in. Thank you. Bye bye. Thank you, sir. Namaste. Thank you.